session, a special session on lecture series in mother tongues. Today is the third day of our celebrations of There is an echo, I'm sorry. Today we are on the third day of the International Mother Language Day celebrations. The CIL has held a series of events over the last 3 days. In this session, we would like to know the ideas of creative writers like you. What is the role of writers in promoting? I'm very happy to have with us 5 important people. We have Professor Jyotirmoy Prodhani from Northeastern Hill University, Shillong. He's the head of the Department of English, and he writes in a variety of languages, Rajbangshi, Assamese, perhaps Hindi, and also English. We have Professor Roop Bhat, Professor cum Deputy Director, formerly at the CIL. He's a Kashmiri. He's an author, translator, media freelancer, and whatnot. We are waiting to hear from you. I welcome. We are also fortunate to have with us Mr. Sethuraman, who is a Saurashtra speaker. It's indeed our pleasure to have you here. We have Mr. Vishram Gadhavi, who is a Kachi language speaker, and Srimadi Shakthi Jyothi, who is a Tamil writer. I must also add that Mr. Sethuraman is a Sahitya Academy awardee. With these learned people, great writers, I'm sure this session is going to rock. So may I invite Professor Jyotirmoy Prodhani to begin his discourse. You can speak in your mother tongue, and maybe you can also be bilingual for the benefit of a larger audience. Rajbangshi, Assamese, Hindi, English, whatever language. Yeah, please. Can you hear me, Uma? Yes, we can hear you. That's right. প্রথমত আমি সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। This is in Rajbangshi language. সকলকে আজি অনুষ্ঠানলে মই ইয়াতে আহি আটাইতকৈ সুখী হৈছোঁ আৰু মোৰ এই ছেশ্যনলৈ চবকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। This is in Assamese. I shall basically be speaking about Rajbangshi language. We Assamese, Rajbangshi আর ইংরেজি সব ভাষাতে কই। যদি সেশনের পরে কোনো কারো প্রশ্ন থাকে তাহলে রাজবংশীতে পুষ্করির পায়, অ্যাসামিসে পুষ্করির পায়, ইংরেজি, হিন্দি অফকোর্স পুষ্করির পায়। আমার যতদূর সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। I'll try to answer the questions. You can speak, you can put your questions in any language if you want to, be it Rajbangshi language, Assamese language, Hindi, of course, in English. Actually, I would like to begin with a glimpse of the language first. And since this is a language which is very strongly rooted with its folk mores, so I shall begin with a very small clip of a folk song in order to give a kind of a feel of the language. This folk song is by a legendary folk singer who also is a Padma Shri, Pratima Barua Pandey. She's part of not only the Rajbangshi cultural history, but the political history as well. She herself was a princess, and she was an accomplished singer, but what she did, instead of singing more elite kind of songs like Rabindra Sangam, which was the fashion in those days, or other kind of classical varieties of vocals, she had opted the songs of the people, and that made her quite closer to the people of that particular region. So I'd now like to share my screen. Hopefully it'll work. Tariq had earlier said me, yeah, it is working. I just 1 minute, I'll just play this song, then
I'll proceed. So that is a song. I would like to read. This particular song is one of the iconic songs in the language. And there's a translation of this song. I just read the first part of the translation, translated by a noted translator from Assam, Professor Pradipacharya. The song is, it crumbles day by day, dine dine khushiya poribe, rongila dalaner mati. It crumbles day by day. The bright mansion smolders away. It crumbles day by day. God, it crumbles day by day. So with that note, I would like to begin my session today. And before that, I welcome all of you to this session. And especially I express my gratitude and thanks to Uma for having brought me in this, I think, one of the biggest gatherings for linguists here. And thanks for putting me on board here. Yeah, when it comes to Rajbangshi language, this is a language many people would not be aware of, like where the language actually originates, who are the people in this language, the speakers of this particular language. Now, if you have to locate the geographical location of this language, then this is a very vast area where this language is actually spoken, which is the area that the people speaks. This is, of course, mostly the western part of Assam. That is largely, that comprises Gwalpara district. There's the westernmost part of Assam. Then this language also, the most vibrant language in North Bengal, that comprises especially Kuch Bihar district, as well as other districts like Dinajpur, North Dinajpur and South Dinajpur, Jalpaiguri. These are the districts, Alipurduar, these are the places where this language is spoken. Apart from that, this language is also spoken in the Pune district of Bihar. So in Bihar also, this language is one of the ethnic languages there, spoken by the native Rajbangshis there. This language has a very vibrant sort of presence in Bangladesh, mainly in southern districts like Rangpur, which is part of old Kamrup Kamata, which is part of this Ondra, and that in Rangpur it is still a very vibrant language. It's still the dominant language. People speak in this language. Also, this language has its traces in areas like Kartua, where the river Kartua had flowed along Rajshahi of Bangladesh and Dinajpur. So this is also the language of that particular region. This language is also spoken in the southern part of Nepal, comprising Jhapa, Morang, and Sunsari districts. This is more or less is the kind of the linguistic map of this language, where this language is spoken. So apparently, this is quite a vast kind of an area where this language is spoken. Now, how this whole idea of Rajbangshi language came into being, how this language gained a kind of a presence in discourse of linguistic academics. Now, this language as Rajbangshi, of course, this is language, informal language, but it found its academic presence
in the book called LSI, of course, everybody knows about it, Linguistic Survey of India of Grierson, where he had made an extensive survey of this language and had came to know that this language, people, when they asked, what is the name of the language? They said, this is Rajbangshi language, the speaker said. Of course, this language has various kind of other names in relation to locations where the people are. In many places, this language is also known as the Deshi language. Deshi means the country language, language of the land. And in Rangpur, of course, this language is mostly known as the Rangpuri language. Some people used to call it Rangpuri. And in Gwalpara, it was mostly known as Gwalparia language. Now a section of people call it Kamatapur language because they want to associate this language with the old Kamatapur kingdom of history. Because since this language is spoken more or less in that particular territory, so this is the language where this language belongs to, so it should be named as Kamatapuri language. Now, but Rajbangshi language, this language as a Rajbangshi language has actually thrived, more importantly, in the scene of literature and, of course, folk expressions. We had this particular folk song, Dine Dine Khushiya Boribe by Pratima Borua Pandey, and this song, in fact, metaphorically, speaks about the destiny of the community, history of the people, and also, of course, individual experiences. It says, day by day, it crumbles. It becomes a metaphoric experience of the community, not only as an individual, but also as a collective. Because this particular community has witnessed in recent times a recession of its historical memories, as well as the recession of its own folk landscapes. It particularly occurred because there has been some kind of political remapping of their own territory into various kind of states. And quite significantly, this community has become a veritable marginal entities in almost all the locations that they inhabit. And that is the irony of the community. In Assam, they are in the Western mode. This language flourished as a literary language. And this language flourished as a literary language under the patronage of Maharaj Durlabh Narayan around 1330. অর্থাৎ around 1330, আমি যে রাজমুখী ল্যাঙ্গুয়েজের পাহাড় খেয়ে বলে তাহলে around 1330, this is the time when Durlabh Narayan প্রথমবার কারণে এক বিশাল ধৰণৰ সাহিত্যিক পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰে হৰিবৰ বিপ্ৰ Hem Saraswati, বিভিন্ন ধৰণৰ writer around his time that started writing in this language. He had commissioned those things, including Monkars writing of Manasamangala Kalpa. So these were the texts which had captured the essence of this language in its written form, despite the fact that it was mostly in oral form. Later, the most important patron of this language happened to be the coach king, Naranarayan and Chikara. How this language attained its own fluency or attained its own circulation. In fact, there were two letters, one by Naranarayan in 1555 and another by Prananayan in around 1565. So these the letters were sent to the Ahom king from their capital at Kuch Bihar, which is now presently in North Bengal. And these two letters are considered to be the early form of both Assamese and also Bengali. But this language is written by the people, by the kings, who is to speak the kind of language, which the kind of language written in that language, those letters, still becomes the present form of this Rajbangshi language. This one major kind of an association with the historical legacies associated with its history. Coming back to the recent times, the recent developments of this particular language, I'll give a very brief account of how all this happened. And if you look at LSI, that is Linguistic Survey of India, then it had made some kind of significant observations. It said in its volume 5, this particular
there's the particular reference to this language, that is Rajbangshi language. And in fact, this is the book which first or named this language as Rajbangshi language officially. It says that the dialect is usually known as Rajbangshi from the tribe of that name already alluded to. That is the community that used to speak this language. They were mostly Rajbangshi people, but there's a tribe, Rajbangshi tribe. And therefore, this language was in fact associated with that particular community, which is Rajbangshi. Some people called it Rangpuri language, but he had mostly supported the terminology as Rajbangshi language. He had given a kind of rough estimation of the speakers of this language spoken by the people around that time in around 1903, which happened in the first decade of linguistic survey in India. He had given 35 lakhs people used to speak in this language in around 1903. But of course, now, given the kind of area that this language covers, it will many as the speakers of this language. And this language, in fact, is one of the oldest Indo-European languages or Indo-Aryan languages of Eastern India, like that of Assamese and Bengali. At the same time, when it comes to one of the major sources of linguistic antiquity, that is Chalyapada. Hello. Yeah? Yes? Yeah, please go on. I think it was someone accidentally. All right. Yeah. So Chalyapada, of course, this is one of the very major significant texts, which is associated with various languages, mostly eastern part of India, includes, of course, Assamese, Oriya, Bengali, Maithili, many languages associated with this Chalyapada. And also, there are various kinds of extracts from this pada, where also we come across some traces of Rajbangshi language as well, because the kind of terminologies used, in terms of lexicons and other kind of linguistic properties, which are quite common to the language spoken by the people at present by this community, which is known as Rajbangshi language. Now, when it comes to the recent developments on this language, there's a kind of hiatus. It did not actually grow because this language did not have a kind of colonial accidental advantages like that of, say, other languages, say, for example, Bengali as well as Assamese. So that became one of the major characteristics or features of this language, because when we have modern Bengali language, modern Assamese language, there is no such thing happened during that particular period called modern Rajbangshi language. So now this language has attained a kind of circulation, and quite significantly, this circulation has been gained by its own people, by its own speakers. In around 1905, that is a significant time, even 1903, there was one significant book by the name called Kuch Bihar State and its Revenue. So in that, Harendranath Chaudhary is the writer of that book. He had actually mentioned this, the people who speak this language is called Rajbangshi language. He was actually giving a linguistic description of Kuch Bihar State. Then, of course, came around 1905 to 1918, it's quite a significant time, because that was the time when a lot of texts were being produced in this language. That was quite a revolutionary in a sense that this language did not have any kind of official sanction, not that kind of, any kind of, you can say, elite quotient, so as to say, because that is not a formal language, but people were writing in this language, and they were also started publishing in this language in around 1905, between 1905 to 1918, and there is one Bongyo Sahitya Patrika and Rangpur Sahitya Patrika. These were significant periodicals in which, in this language, people started writing. And of course, in this movement, one fellow was very important, that is Thakur Panchandan Barma. So this is again important. This particular movement also occurred, this linguistic movement occurred in Rangpur. Rangpur happened to be now in Bangladesh. So with the history of the development of, you can say, modern Rajbangshi language or modern Rajbangshi literature,
Rangpur is a very significant territory. Okay. Then, of course, in 1928, Gaurinath Shastri had compiled the Mahabharata, Astadash Mahabharata, by one Kavindra Patra, who had written this particular Mahabharata in around 16th century. Kavindra Patra is an important individual, important figure, because he was one of the generals of Chilarai. Chilarai is one of the legendary warriors of the Gauch dynasty in the 15th, 16th century, when, of course, this Kamrup Kamata had the biggest kind of a territory, okay, comprising almost full of Kamrup. It had its expansions up to Manipur, Tripura, then of course Srihatta, the Sylhet, then of course Rangpur, then Dinajpur. It's a huge area covered by this Kamrup Kamata of Narayan. And Kavindra Patra was one of his generals. And he had written one Mahabharata. Okay. That Mahabharata was commissioned. It was in tatters, basically commissioned by the Rajas of Gauripur, who happened to be the descendants of this Kavindra Patra. He had published this book in around 1928, and he had said that this was the book written in Rajbangshi language. So this is another major sort of development occurred. So in 16th century, Kavindra Patra had written the Mahabharata in this particular language. And it only accidentally, or you can say, through his own initiative, discovered by Gaurinath Shastri. Then in around 1914, Banikanta Kakati, who is of course one of the famous linguists from Assam, he had also recognized this language as a Rajbangshi language. Of course, he had said that this is a dialect of Assamese. Then in around 65, there was a book called Rajbangshi of North Bengal by Charu Sandal. He had also spoken about this language. Now, of course, a lot of new scholars are there. Pendranath Burman, Vijayanath Bhagat, Girija Shankar Rai. These people have established this language as a language of the people and a legitimate tongue of the community. With that, now I'm coming to a little bit of the creative aspect of this language. Now, this language is mostly associated with its folk expressions. It's one of the most vibrant languages so far as the folk expressions are concerned, because this language is associated not only with folk songs, also folk dances, folk rituals, folk gods and goddesses, like Shonarai, Mashan, Hudumdev. All these rituals, these are the native deities of the Rajbangshis. And with all these deities, various kind of rituals are involved, along with various kind of dance forms as well as songs. Then Modan Kamde. And these songs associated with these deities becomes a kind of folk heritage of the community. And so this language has a very strong root with its own folk mores associated with its own spiritual life world. Then, so this is one aspect of this language. It's mostly a language for the folk literature or oral literature. Now, in around 1992-93, one significant book came. It's called Rajbangshi Kavita Shankalan. This book was edited by Jyotin Barma and Binod Bihari Burman. This is a quite significant book in the sense that, and of course, there were some other things also happened at that time. But this book is significant because this book had happened in 1993 when the territories of this community was almost settled, more or less settled. Some people in Kuch Bihar, some people are in Assam, some people in Rangpur. They had their own now territories. And this book brought in the poets writing in this language in all these places for the first time. That is Rangpur, that is Kuch Bihar, whole of North Bengal, Dinhata, Jalpaiguri, Siliguri, then of course Dhubri in Assam, Golokganj in Assam, and then Kokrajhar in Assam, then also Nepal, then also Bihar. So this is for the first time, the community again became united through poetry. So this is one significant thing that had happened through this particular book of 1993, Rajbangshi Kavita Shankalan. And before that, of course, when it comes to poetry, we can go back to around, say, early 19th century, when
Rotiram Das, he used to write in this language from Rangpur. He used to call it Jaggan. Jaggan basically means songs to rise. Okay? And this he used to write as a kind of documentation, folk documentation of the things happened to the community because of British atrocities. Okay? So that is one significant thing happened, and this is considered to be, you can say, the first modern Rajbangshi literary pieces written in that language, these Jaggans. Later, of course, there came Sat Bhaiya, the seven brothers. Okay? So their poems were collected by Dr. Girija Shankar and it was published. So that was another major, I can say, radical thing to happen, that the language, which is basically an oral language, which is basically a language of the folk expressions, finds a legitimate place in the collection of poetry, which is modern poetry, so as to say, modern creative writing. And people like Panchanan Barma started writing in the prose of this language. He had also written one very famous short story with Jagannathi Bilai, and also he had written poems like Dangdhari. Okay? So those were the very early part of this, the movement to regain the status of the language in the modern literary expressions. Now, this 1993 is important because by that time, because of their own state identities, say for example, in Assam, Assamese is our language. In Bengal, Bengali became their language. In Bihar, of course, Hindi became their language. In Bangladesh, Bengali becoming a language, their own language. But so this language lost its capacity for formal expressions. Okay? So this writer started writing in this language. So it almost, looked very amateurish at writings, but they started regaining the capacity of this language to speak the modern idioms in the same language. So this is one very significant thing that had happened through this particular book. After that, of course, we come across various kind of writers, like one Kamalesh Sharkar. I'll give you one small story about him. But this is the time when people do not even bother about this language. They think that this is the wasters of time to write in Rajbangshi language. People don't even read. They think that's the very most unserious kind of writing. So one Kamalesh Sharkar, he would be writing poems and he would not be able to publish his own poems. So what he would do, he would print one pamphlet of his poem and he would Xerox them and he would sell those poems in the market days, in the villages. So on his jhola, he would carry this pamphlet of his poetry and he would be selling it for 2 rupees, one pamphlet. So people, out of curiosity or sympathy, they would just buy. And that became a kind of only sustenance for this poet. So he could survive only by selling poetry in the literary sense of the term. That was Kamalesh Sharkar. He was one of the early poets. And then came another poet like Jyotirmoy. He himself, he is also a small businessman, but he would write in this language. So this language revived, or this language gained its capacity for modern expressions by very small, ordinary folks of the community. Somebody would be just a farmer. Only thing he would do, he would go to the field, he would plow his field, plow in the field, come back his home in the evening, and he would write poetry. Okay. Some people would be there, just he in a small shop, and he would write poetry in his off time. Okay. And this poetry gained, this language gained, it's this modern capacity of expression. So these group of people who were, in a sense, too ordinary or very simple individuals. Okay? And now, of course, this language has gained kind of a capacity to draw the attention of the, you can say, the elites of the community as well. I would just, maybe I'm almost coming to the end of my session, perhaps. Uma would tell me. Yes, maybe you can take 1 more minute and we can have interactions. Yes. I'm just ending this with one small translation of one of the poems. It's called Kuch Bihar Tapas, okay? By Jyotirmoy. It's called, I'm just reading a little bit of this to give a glimpse of the modern Rajbangshi poetry.
The majestic Kuchbihar Palace stares vacantly like an abandoned orphan at the dull glow of neon lights. Along every nook and cranny of the grand royal walls run the parades of people routes and a zoo of insects, flurry of parrot nests. Yet at the break of dawn, people flock there like pilgrims to a fair. The grand son would toddle, holding his grandpa's arms, and would keep listening to the tales of queens and kings. They would keep coming to the palace, following the pull of a pale affection or of a nameless love, as if the barren hearts are filled at its mere proximity. Kissing tenderly the dome and the whole body of the palace, the day makes a tired retreat, putting it softly to sleep. And the palace, holding on to a flickering lamp to her bosom, waits for a new sun to rise. With this, actually, I would like to end my session. Now I'd like to invite any kind of questions if you have. And you can ask in any language, Assamese, Bengali, Rajbangshi, of course, Indian English. Yeah, of course. Thank you so much, Jyotirmoy. It was lovely to listen to you after a long time. You took us into a beautiful historical journey of Rajbangshi and how it is used in writing over a period of time. What are the major milestones in using your beautiful Matrubhasha to produce literature, whether it is poetry or prose and other forms, and how over the period of time the different writers adopted various styles like informal registers, how they got and how they gained capacity to express it in modern days, in contemporary days. Now this presentation is open for discussion. Feel free to interact with the author, the writer in this case, in any language, like he said, Rajbangshi, Assamese, Bangla, Hindi, and English, maybe some more, whatever language he may answer. You can also put your questions in the chat box. Yeah. It's open for discussion. Any queries, like any curiosity of what more you wanted to know about Rajbangshi in creative writing? So I would like to initiate it so that others can join. So, Jyotirmoy, like you yourself are a writer. Yes. How much Rajbangshi writing you do compared to your writing in Assamese or other languages like Bangla? And what is your opinion? How do you think when Rajbangshi it's a lesser known language? How do you think you can influence the Rajbangshi society to read and write more and more in their mother tongues? What is your role in promoting Rajbangshi? Yeah. Of course, you can compare in terms of modern literature that's happening in case of Bangla and Assamese, but there's a huge body of literature editions. Okay? In terms of modern writings, what is the strength of this language, Rajbangshi language? Is its folk literature. That is the biggest strength of this language. When it comes to modern language, modern writings and modern literature in this language, this is relatively new. All right. So from that point of view, this language, of course, we perhaps cannot compare with other body of literatures around like Bangla and Assamese. But this, of course, what is quite significant about this language is that this language is not restricted to one state as such. Okay? The community is actually writing in this language in today's time across borders. So it's a trans-border language it has become. And this language has brought together the community who got separated because of these historical demarcations. A lot of writers are writing now in North Bengal, a huge body of writing in this language. In Assam, west of Assam, quite a significant body of literature is being produced in this language.
Then Bihar, I can name like Vasanta Das is a very veteran individual. Then one young boy, Jagannath Das, he's writing from Bihar. Then Bhimraj Rajbangshi from Nepal, he is a major writer. There are plenty of writers. In fact, this language is now recognized as one of the recognized indigenous languages of Nepal. And one significant thing in Nepal is that every language is a national language in Nepal. I think we also need to adopt that kind of a policy. Whatever language is spoken by the people of the nation is a national language. And then different official languages. When it comes to the national language spoken by the people of the nation is a national language. Any language is a national language. So we need to have perhaps that kind of policy framing towards our own language policy. In 2010, this language was recognized as by Sahitya Academy. So Bhasha Shamman was given to Dr. Girija Shankar Rai for his contributions in this language. And writers, now young writers are writing, very, very young writers. One is Piyush Sarkar, he writes very well. Then of course, little senior to him, Nikhilesh Rai, Deepak Roy, these are some of the names I'm just citing. Then from Assam, we have even non-Rajbangshi people like Amitabh Ranjan Kanu, he also writes very good poems in Rajbangshi. So this language is gaining a different kind of momentum with the young hands now. So that is one good sign. And when it comes to my contribution, of course, my contribution is very limited in this entire movement. I've recently published one book. I'll just that is called This Land, This People. This, I think you can see this thing. This is a translation of Rajbangshi poems, where my report is that people should know about this language, about the poetry of this language, written in this language. So this book comprises writers from Assam, Bihar, Nepal, Bangladesh, Bengal, of course. So this is all around 115 poets are there in this particular collection of poems, collection of translations. So this is one small contribution I had made. Apart from that, I also write in Rajbangshi language. I write poems mostly. And recently, I just give you one small glimpse. I have also sung in this language, for the, you can say it's a folk-derived song. It's a modern instrument, it's not the folk instruments, but a folk song. I'll just give a glimpse of that song as well. Namla Bison, Roa Bari the Bolan Dawa, Namla Bari, Namla Bison, Roa Bari the Bolan Dawa, Shakale, Baby Dara, Purushanga, Godu Chara, Tate Paloma She, Dishalu Beta Darjo, Tate Paloma She. Okay, this is one of the songs I have recorded recently. Lovely. I mean, I knew you were a good dancer. I knew you are a good singer too. It was lovely, and it's nice to see like how you are trying your best to motivate young people to read and use Rajbangshi. I can say Jackie here. Jackie, you are also a Jackie is a very noted writer from Assam. Oh, okay. His father was a Namaskar. personality. Thank you, ma'am. He writes in Assamese, a columnist. So his father was Jackie, if you allow me, I can ask a question. Pramananda, yes. Pramananda. Yeah. Pramananda is a very important poet in Rajbangshi. Thank you very much. Thank you very much. Actually, I have studied the language since 7th century. I have found some names of poets like Hem Saraswati, Harihar Vipra, or Madhavdev.
Actually, Assamese are demanding that they are the ancient poets of Assam. And in that point of view, Dr. Bhakat, Dijan Bhakat, has referred in one of his articles in Degor, published by North Bengal Academy of Culture towards 2010. Yes. I have found that he has mentioned them as Rajbangshi poets of early ages. What is your opinion regarding this? Hemkanti Saraswati or Harihar Bipro Madhav Dev, like this? Yeah. See, thing is that when they used to write, like hamsters at the Harihar Bipro, they used to write in the 14th century, okay? Under the region of mostly Durlagaran, who started ruling in 1330. So when they started writing, there was no name to the languages, nor Assamese, nor Bengali, nor even Rajbangshi. Okay? They used to write the language of the community. So the king's diktat was that you write in the Deshi Bhasha. Likho in the Deshi Bhasha. Okay? So Deshiyo Bhasha, the language Yeah. of the community. That's there. Now, when In the case of Pitambar. yeah, Pitambar also. Now, what happens? Even Monkor written that on Manashamangal Katpo. Okay? Yeah. That's very significant. And Manashamangal Katpo is now the folk poetry of the Rajbangshis. But again, if you read those texts, you would come across a lot of references to the linguistic references, for examples, which are very much part of the Rajbangshi vocabulary or Rajbangshi linguistic tradition now. So, what Bhagat sir had written, that's quite a radical writing, of course. He had also spoken to me that I had written that way in Dagor. He had his own, yes, that's quite justified. You can, of course, claim that to be the early form of Rajbangshi. You can always claim, because in Assamese also they call it early form of Assamese. It's not Assamese, it's early form of Assamese. So it evolves, language evolves. So you can always praise the language, early form of Assamese writing in the writing. Of course, in Rajbangshi, because they're cognitive languages. Some people even also claim, like Noranarayan's later, they also claim it to be the No. Yes, Jakir, you must say Huh? Jakir, so that people can hear that. দাদা মই ভলিউমটো পোৱা নাই বেছি More paisa. I am also not being shown in the screen because my video is not showing there. Anyway, it's coming in various now channels. just I have seen the pictures. No, Jakir, I can see. I can hear you. Can you tell me? Can you tell me your answer or queries? I am not visible on the screen. Yeah, Pramananda. Volume is very low. Volume is very low, Dada. With me, it's for me. I'm not sure. Just a minute. Let me try. No, I've been full volume. I'm not sure why it's happening. Uma, is there any problem with my audio? No, we can hear you very well. It is nice, but I am not visible on the screen. Yeah, Sri Ramananda Roy, maybe you have to keep your video on. And Sri Jagir Saab, you can speak. We can hear you. We can hear you. You I can have speak kept it on, but I am not ma'am. visible. I'm not visible. Actually, I am the great fan of Jyotirmoy Prodhani sir. Is also my elder brother and is my inspiration. That is why I am very happy to join this organization. It's a very well-known persons, all are. That is why I said these people and this land, we are also here that Deshis come here with a very large scale, that we are proud that we the Muslims from converted from Koch Rajbangshis. Actually, we are the original people of this land, and that is why I am very feel proud that our Rajada comprising a books, these people, this land. Thank you, ma'am. In that book, of course, his father's poems are also there. He is a very good singer also. Very good politician, singer, poet, so many things. And Thank you, sir.
for your appreciation. Lovely to Yes. hear from the people of Rajbangshi. So we would like to continue this, but I think since I have a small question, madam. yes, Sir. please. Yeah, sir, namaskar, sir. নমস্কার হ্যাঁ তুমি বাংলায় বলতে পারো সুজয় Sir, রিসেন্টলি ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো কামতাপুরি রাজবংশী ইনস্টিটিউটে গঠন করা হয়েছে, হ্যাঁ ঠিক আছে? তো আপনারা এই আসামে কি কোনো রাজবংশী স্কুল বা কামতাপুরি স্কুলের কোনো ইনিশিয়েশন হয়েছে? Bengal, one good thing has happened to now in Bengal, they have opened up schools, primary schools, where Rajbangshi language is being taught. Also, same language taught in the form of Kamatapuri language. Sujoy, actually, আমাদের আসামে আমরা প্রপোজাল দিয়েছি আসাম গভর্নমেন্টকে। ওকে, কোচ রাজবংশী সাহিত্য সভা রিসেন্টলি প্রপোজাল দিয়েছে আসামের চিফ মিনিস্টারকে, আমাদের এখানেও রাজবংশী স্কুল খোলা দরকার। আর দেখা যাক কি হয়, মিনিস্টার আশ্বস্ত করেছে, and we are also fighting for that so that we can at least introduce this language in the primary level. Sujoy, that's a good ধন্যবাদ। move. I'm really happy to know that some good move is happening in case of education and inclusion of minority languages in Assam also. Thank you, Sujoy, তোমার বক্তব্যের জন্য। Yeah, Tariq. Yeah, you have something. Yes, before I ask my question, let me compliment the speaker for the melodious voice he has got and the harmonious pitch and tempo at which he has delivered this talk. Sir, I'm very, very impressed. Thank you. My question is twofold. One is related to the question that Sujay has asked, and the other is regarding your mention about the existence of Rajbangshi speaking people and Rajbangshi people in the state of Bihar. There, they do not call themselves Rajbangshi or Rajbangshi. Rather, they prefer to use the term Shershabadi very often. And I do not know very well whether Shershabadi is very similar to Rajbangshi or very, very different from it. I would request you to throw some light on it. The second one is there are received in this institute regarding recognition of Rajbangshi for to be recognized as a scheduled language and to be considered as a medium of instruction for school and higher education. Over to you, sir. Yeah, thank you so much, Tariq, for your kind appreciation. I'm really obliged and I'm humbled by your compliments. Yes, one is, of course, when it comes to Bihar actually mostly in the area Kishanganj, Purnia, they have a kind of the Rajbangshi Bhasa Parishad, Sahitya Parishad, they've opened up that one. And then started writing in this language also. And in this particular book, these landless people, their poems, some of the poems, published by this organization have also been incorporated. So people belonging mostly to Bihar's Purnia, Kishanganj, this is territory mostly, they're the minority. Now they call themselves Rajbangshis. What is a Shahbadi? I'm not quite sure though. Shershabadi, they call it. Shershabadi, yeah. Yes. I have to verify. Are they Muslims? Yes. Yeah. Yes. So it's quite possible that perhaps in one point of time of history they might have got converted to Islam, but culturally they belong to the same community, same language. Only in terms of religion, perhaps. So they have some kind of difference, like what Jakir has just told about that. Rajbangshi converted to Islam in certain point in history, so that is quite possible. Thanks for this particular information. That I'd like to know more about this Shershabadi thing from Bihar. Thanks a lot for this actually. And when it comes to education, yes, we are also trying to make one of the applications. Uma also gave me some kind of tips how to write an application for incorporation of this language for higher education, in other pedagogical institutions. Thanks, Tariq, for your questions. Any other brief question before we move on to the next speaker, Professor Roop Kishan Bhat?
Regarding Shirshabadiyas, as Mr. Tariq has mentioned in this session, I would like to mention one point that actually they belong to the district of Malda in West Bengal. So far, I have studied regarding them. The Shirshabadiyas belong to Malda and they have a separate language movement and cultural movement. They have publications also in their own motifs or in their own agenda. They actually they are centralized in only in the district of Malda, but I don't know. I have no idea that they are also belonging to South Dinajpur and West Dinajpur, West Bengal. They are completely centralized in Malda. So far, I know. Yeah, thanks for this supplementary. Thank you so much for this clarity. Thanks, Premananda. Thank you. But I am not still being visible on the screen. Premananda is a handsome man, by the way. That's very well. I just want to ask one question. Here's the Can I ask concept with Anjali to Rajbangshi. Yes, Professor Sachdeva. Yeah, Sachdeva. Yeah. No, my question is, are Rajbanshis given a separate status as a tribe now? Yes, sir. Actually, what happens, Rajbangshis are recognized as scheduled caste in West Bengal. And of course, in Assam, we have been fighting for this particular rights since around 1950s. 1905, people got organized. 65, there's a formal sort of demand for ST status. In Assam, we're still fighting for that particular status. Government says that's almost the last leg of recognition. Let's see what happens. But at the moment, Rajbangshis are considered as other backward in west of Assam. Only in Gwalpara district, we are considered as more other backward, MOBC. It's a status. Because Dr. Burman, who was our principal of ERLC, he was quite involved with the Rajbanshi. I think he has this dissertation on Rajbanshi as well. Yes, Satan Burma, you're referring to? Yes. He was a good friend of mine. Yes, he's one of the first ones to have done his PhD on Rajbangshi language. That's a big contribution he had made. He just passed away exactly a year Recently back. passed away, very, very unfortunate, yes, sir. I'm glad that He was a multilingualist. And I'm sure he'll be happy that you're working for the cause of the language. Thank you, sir. Thank you so much, Jyotirmoy. I know you are in the middle of a wedding, but we would like you to participate in other discussions also if possible and be with us as long as your people come to get you away from wherever you are. So now I am. Thank you. Thank you so much for accepting our invitation, but be with us as much as you can. And maybe there will be questions. Yeah. Thank you so much. Yeah, now I would like to invite Professor Bhat, Professor Roop Bhat. Are you there? Yeah, I'm here, but my video is. What happened to your video? Why? With my video, but yeah, it takes Sir, some time. Sir, you can try. Namaskar and good afternoon, everyone. What did you say? Are you able to listen to me? Sir, in case of video, you can try once disconnect and connect again. I'm putting it on, but it turns off automatically after some time. I don't know what's the problem. What he's suggesting is, can you quit and rejoin? Quit and rejoin, I don't know. It takes some. Thank you, sir. Please continue. You're listening to me now. You're listening to me, but I'm not here. Yes, okay. Yeah, please go on. You can use Kashmiri, Hindi, and maybe Urdu. And so video or no video. Let's talk only. You cannot see me. So I will, in the meantime, try through my mobile also if I get connected through my mobile, but my laptop is some problem. Anyhow, first I must thank CII Mysore to invite me for this discussion today. In the backdrop of International Mother Tongue Day, the three-day program which you are celebrating at Mysore. It's a great pleasure always to come back to CIL. And in the beginning, I spotted Dr. D.P. Patnaik. Here also, I think he is there. My friend Rajesh is there. And maybe so many others who are not on the screen. Thank you all joining. Now,
I will speak with reference to, of course, my mother tongue is Kashmiri, so my discussion will revolve all around Kashmiri language only. So Kashmiri language has a very, old oral tradition. We have got thousands of years of tradition. We, in the backdrop of the language scenario, which was there in Kashmir, in the earlier years, we had a golden period of Sanskrit there, followed by Persian. And Kashmiri language at that period, because it had not any government patronage, it was neither the official language nor the language of darbars or courts, government courts. So it was more over the language of masses. So it is only since 14th century we have a written history of literature, starting from our saint poetess Laldet, followed by Nundrishi, and there onwards a huge literature is there. I just want to, because I'm supposed to speak on my experiences as a creative writer and the importance of mother tongue. I would say, suppose, quoting from Laldet, the first poet from Kashmir, she wrote in the people's language. The verses she wrote was Walk. It comprises of four lines. So they were so popular amongst the masses that even now, after 700 years of her, these are quoted in day-to-day, experiences and conversations. This was then followed by Nundrishi, another sage poet of her lineage. He composed shruks, 4-line liner again, but the meter and the was slightly different. So they were named as we have Sanskrit shaluk, it's the modified form of shaluk. They were named as shruks. These are also popular even now. But then we have 300 years of tradition of writing, mostly poetry, till 19th century. Again, these poets struggled. The writers struggled because they never, it was only the language of masses. So they composed so much, they wrote so much in this language, which, was most of it was transferred orally from one generation to another. Because at that time, there was not much, writing system was not prevailing there. So slowly, when we come to the 19th century, then again, Urdu becomes the official language of the state, right from Dogra rule. It stayed there for almost more than 100 years, right from 1800, mid of 1800 to 1947, till the independence of India. Then again, Urdu was made the official language of the state post-independence, which it is now also. So within this period, Kashmiri writing system, the literature had developed. So people started writing prose now. So prose writing is very recent in Kashmiri literature. It started with drama, then short stories, followed by novel and we have got all the genres. The point I want to make here is Lallet's work survived all through 700 years because she used the common language in her poetry, which was easy for masses to remember, which was simultaneously meaningful and easy to
memorize. And then many poets thereafter, Haba Khadun and Muhammad Ghami, Rasul Mir, and all those who wrote poetries, their verses also were transmitted like that. When we started writing prose, when we come to the 20th century, our first generation prose writers started writing in other languages than in Kashmiri. We have names like, for example, in prose writers, we have got short story writers like Akhtar Muhyiddin, Amin Kamil, Hari Krishen Kaul, all of them, Ali Muhammad Lone, all Amin Kamil, these 4-5 names, they're first generation top prose writers in Kashmiri. All of them started writing in Urdu, mostly Urdu. And then subsequently, within 2 or 3 years of their writing career, they switched over to their mother tongue, Kashmiri writing. Naturally, they became, instantly popular. Just within 1 or 2 writings, every author, right from Akhtar Muhyiddin to Ali Muhammad Lone and Amin Kamil, Hari Krishen Kaul, they became quite popular in their writings only once they switched over to their mother tongue. 1 or 2 names like Hari Krishen Kaul continued writing in Hindi as well as Kashmiri throughout his life. But naturally, of course, Kashmiri, he received much recognition. And all others completely switched over to Kashmiri writing. And they made their name. Same happened to the poets. We have got the eminent poets, Dinanath Nadim of the modern period, Mahjur, Nadim, Rahi. These are top poets of the modern period who all the 3 started writing in other language. They started writing in Urdu. But immediately after, within 1 or 2 or 3 years of their writing, they switched over to Kashmiri. And now they are eminent. Mahjur is no more, but Nadim is no more. Rai Sahib is very much dear. And they made their name in Kashmir. They were very, popular. They are top grade first generation poets of Kashmiri language. Thereafter, whosoever wrote, he wrote as a Kashmiri writer, or he wrote in other language also. We've got Professor Atal Shant, he writes in Hindi and Kashmiri also. But naturally, he is more popular in Kashmir. Similarly, in Urdu, Kashmiri and Urdu, right, we have got Zaman Azurda, who has been part of CIL also some time back. He writes in Urdu and Kashmiri. He writes essay. He became very popular writing as an essay writer in Kashmiri. He writes in Urdu also. So my point is that over a period of time, within the historical perspective also, if we take it, all those writers who tried to write in other language, they at one or the other point felt it, perhaps necessary to switch over to their own mother tongue and continue writing. And they became very successful writers. It's not that you cannot write in other language. You cannot write in English. And we have very eminent English writers in India. We have eminent Hindi writers also. Most of the Hindi writers, it is their mother tongue. They write in. Most of the Urdu writers, it is their mother tongue. They write in. But for English, the situation is different. English is not the mother tongue of people who write in India in English. When I started writing I write short stories, and I have published 3 collections so far. I also translated some of my stories into Hindi, and 1 collection I've got in Hindi. But my point is, as a writer, there are several, dimensions of writing. First is, when you start writing,
it is the language which matters, how much competence you have as a writer. What is the total, how much is your idiom? How strong is your idiom? How much you know about the proverbs, sayings? And then second important is how much you are connected with your folklore, with your rituals, with your traditions, with your culture. And this I have been feeling because I now presently I'm living away from my land. It's a diaspora situation where I sometimes now have started feeling that my, I sometimes, practically crave for the certain situations when I write. Even my idioms and proverbs are slightly, I feel they are, drying up. So as a writer, I think that writing in mother tongue is a pleasure. It is easy. It satisfies your emotions also, because as a mother tongue speaker, emotion is what matters to you. Whenever we are charged with emotions, it's only the mother tongue which we use. Even we use mother tongue for crying, we use mother tongue for expressing our grief, anguish, or pleasure, whatever it is, whatever the situation, emotion we have to express. This is, as a creative writer, writing in mother tongue and writing in other language are definitely different situations, but writing in mother tongue, you feel more comfortable. You relate with issues easily as compared to writing in other tongue when you are not part of that cultural milieu. You are not part of that system. You simply, watch, but you don't live day to day with that system. That is number one. As a translator, I have translated many works. I have translated 3 important works for Sahitya Academy, 2 novels, 1 selected All India short stories. I have translated a novel, a famous Konkani novel of Damodar Mauza, Carmeline, and Surinder Verma's Mujhe Chand Chahe Hindi. In both these works, as a translator, I again feel that translating from other language into my mother tongue are more comfortable than translating Kashmiri into English or into Hindi or into Urdu. The same situation is there also. When you translate any work into your mother tongue, you are competent to relate it to your own culture, to relate it to your own, your traditions. That's what makes a good translation is when you're able to, suppose you're translating from English into Kashmiri, you have to keep the cultural backdrop, cultural perspective in your mind. You're writing for Kashmiri readers, so it has to have the acceptability. It has to have a match with the local culture, with local traditions, with local way of life. And when you're translating from your mother tongue to other tongue, say to English or to Hindi, then you again have limitations of your experiences, limitations of your cultural, background. So definitely, one is not able to do justice to such a work as you are comfortable in your from other tongue to your own mother tongue. So mother tongue, I think, is, though it has taken years for people, international people like UNESCO and UNO to realize the importance of mother tongue, which they have realized
very recently, just 2000 onwards, 2000 February, we have been celebrating the International Mother Tongue Day. It was only in 1999 the UN recognized the importance in the true sense of the mother tongue. And since then, you know, we have been celebrating this day. And I feel the last 2 years during this COVID time, when most of us are now online, we are holding virtual meets, virtual programs, seminars like this and all that. We have more and more realized this, the importance of our mother tongue now. I see that many people who were not concerned at this language issue or language scenario in the country are slowly realizing the importance of mother tongue. I know I mean, the importance in a way that they feel that when you are on the virtual meet, you relate with people with whom you are speaking, talking within your language group I'm talking of. And you feel very comfortable. They say that you have one-to-one discourse, one-to-one, correlation with the listener. So, and again, the advantage has been in the real sense, which we used to talk of as a global world or global village. It has really reduced it. This online system has really reduced it to the global village in the real sense now. And when we see our children right from the, class 1 to topmost, you can see the importance of how much we have, gained in a way in terms of instructions. I feel we are more, we are in just omne-samne, what we say is now, which was not there earlier. Thanks to the new technology, thanks to internet, and thanks to the circumstances, which has, again, this channel is growing more and more powerful day by day. Now, again, we see, so as a linguist, if I speak something as a linguist, is when we go for a study, when we study some language, as a mother tongue speaker, suppose I have written some, my linguistic work is mostly on Kashmiri. I wrote the first was the descriptive grammar of Kashmiri language. So I was my own informer also. And whatever I wrote in Kashmiri, I'm my own informer. So here also the advantages of as a native speaker, if you are working on your own language, your authenticity becomes more. Nobody can challenge your data. While as the data collection, for data collection, we go around places and then bring it, recorded data, then analyze it, and then many questions are even raised after that on the authenticity of the data. So I feel this again is an advantage if you are working on your own language and you are the informer, you are informer yourself. So your work is naturally supposed to be of some standard or of some good standard, or at least based on the true and facts also. Nobody can challenge your data at least. So I see many advantages to as a writer, as a translator, as a linguist, to work in your own mother tongue, to work for the people whom you feel you are part of, you have been part of, and you are part of, and who understand you, understand your language, understand your feelings, understand your expressions. So that way, I feel that mother tongue really is something which gives you the ultimate satisfaction whatever you do in it, whether you work as a linguist, whether you work as a creative writer, whether you work as a translator, or you work as a reporter somewhere, as a media person somewhere, you prepare some dispatches or something. It always is, you are always at home whenever you work within your own
mother tongue. And another point I want to make it here, which I have been realizing living in diaspora, which I realize within my children, my young generation, people now who are not part of the that society, who are living away from their language groups. I feel the children are, unfortunately, they don't live the complete life because they don't know their own culture. They don't know the traditions. They don't know the rituals. They don't live in those traditions and rituals. It becomes very difficult for me sometimes to tell my granddaughter, for example, some 6-year-old, to make her understand what Kerath is, what Shivratri, why we are doing all these things, what is this. And as a result, the language issue becomes there. Suppose I feel the youngsters or the children who speak whatever language they may be speaking other than mother tongue are not perfect speakers. They cannot become the perfect speakers because they don't know, number one, they don't know all the idiom. They don't know the proverbs. They don't know rituals. They don't know, they don't remember all the day-to-day activities. So whatever language they speak is a very limited language, which is just spoken language. They just, convey their, they are able to just interact with their classmates and all that. So in your language, when you are not able to use the idiom, you are not able to use the proverb, you are not able to use the riddles, you are not able to, correlate with your traditions, I feel it becomes a sort of काम चलाओ language. Just ठीक है, बात करनी है ऊपर से, but that the complete perspective, that whole milieu is not there, it's lacking. That's all. I think this is just what I had to say something about in reference to today's discussion. Thank you very much for listening to me without this video. I'm sorry for that. Thank you, Professor Bhat, for your wonderful ideas and views on how mother tongue influences creative writers. You rightly said that mother tongue is very much closely associated with our emotions. I could see that and feel that in your voice as well, and how we are more comfortable in expressing ourselves in our own mother tongues, whether it comes to creative writing or translation or any type of writing. I would like to now invite comments, feedback, and questions or interactions with the author, Professor Roop Bhat. Please feel free to interact. Okay, Roop, I want to ask a question. Yeah, please, Rajesh. The whole idea of Kashmiri as a medium of education in schools, there is no movement really for that in the state, isn't it? You're right. As I said earlier, Kashmiri was not an official language. Even after our independence, post 47, it was Urdu only. It's only very recently when the Jammu and Kashmir was, bifurcated into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. In J&K Union Territory, they have added 3 more languages, not only Kashmiri. They have added now Lodi, Kashmiri, Hindi, and English. Besides Urdu, this is the only state where I've got 5 official languages now within Jammu and Kashmir. So far as your question regarding the medium of instruction is concerned, I know Kashmiri started from PG level. It started from it was in late 70s when the Kashmiri department was
started at the University of Kashmir. They started with MA, PhD, and then they also started diploma in Kashmiri. Then it came, the departments were started in college level. And later, after so many years, at the school. But in school, it was not there. Till last 4-5 years, it was not at all in schools. Now, recently, for past 3-4 years, they have started it in schools. It is now up to 8th. But even now, it's not a medium of instruction. It's only a subject. It's only a subject, no medium of instruction. And up to now, they are, I think, extending it to 10th now. And then maybe 11, 12 subsequently. But it is now in college, university, and up to 8th as a subject, not as a medium. That's very unfortunate. But I don't know now, new education policy insists that we should have primary education through our mother tongue. In that, with reference to that decision, if the government of Jammu and Kashmir takes some steps, maybe, I don't know, I don't have any information as yet whether they have started preparing the books in various subjects and all that. But practically, it's not there so far. Yeah, any other questions or interactions? Yeah, Professor Roop Kishan, I'm also curious to know, since I know so many of you and the families living in Delhi and other parts, I also have seen that many of the, like you said, the young kids are not familiar with using Kashmiri fluently. Don't you think it's also our responsibility to add to that by reading out some short stories from Kashmiri books, or also introducing them to other forms of children literature? No, it is, of course, it is our responsibility, and whatever we can do, we are doing in this direction. Suppose in Delhi, we try to do our best, whatever we can do. Number one, the challenge is to preserve the language in itself. So for preservation, another important thing is making the courseware available. We have, for example, so far as Kashmir is concerned, we have with the help of CII some 20 years back, or 2000, we got published the primer and reader, 2 books, set of 2 books. We also got prepared one audio cassette course for Kashmiri. Again, it's only CIL contribution towards this. And these books are used throughout. And in the meantime, many other courses have been done. We've got Professor Cole's, spoken Kashmiri, and other materials, Raj Kachi, spoken Kashmiri. There are so many materials right now available, and people are using them. Then there are some magazines. Suppose we are bringing out one Bhat. Bhat is a literary magazine. It's dedicated to Kashmiri language literature only. So people are, reading it, and people are subscribing to it, and that also becomes, a medium of preserving our language. But yes, the issue is very serious, because unfortunately our people have been sometimes, deliberately ignoring the mother tongue, because ultimately many amongst us, many within, I'm talking only about the Kashmiris, they unfortunately feel that in case they, ask their children to speak in Kashmiri, to learn Kashmiri, it may impact their other languages. That's a layman excuse. They say that, maybe they may not learn English better or Hindi better. So better to ignore. Number 2, they say, kya hai? It's not a bread earning language. That's a very common, phrase used amongst Kashmiris. से कोई फायदा क्या है, कोई रोजी रोटी तो मिलेगी नहीं यहाँ पे. That is a very silly argument. And
third is the complex. It's not the complex, impurity complex, not only amongst the Kashmiris who are living outside Kashmir. It is within Kashmir also. Within Kashmir, you can see those people who are there, have been staying there, or preferring Urdu, tutti-frutti Urdu, rustic Urdu or Hindi than pure Kashmiri. It's a very unfortunate situation. See, as I said, you cannot, it's very difficult to grow equal competence in other language comparatively with your mother tongue. So they prefer कि टूटी-फूटी Urdu ठीक है, but अच्छी वाली शुद्ध Kashmiri नहीं है. Shuddha Kashmiri, they say that it's an inferiority complex because there are many other factors, historical also. We have had the slavery, we have seen the slavery of hundreds of years. Outside rulers have ruled us for so many years. So that has impacted because Kashmiri could not get the official recognition. It was not a Darbar language, neither in the Persian period, nor in the Sanskrit period, neither in Hindu rule, nor in Muslim rule. So it was very recently, even now, the independent India also they also did not do anything whatever they should have done for Kashmiri language. So it remains an ignored language despite of being the important language of India, very important region. So that there are several issues combined together. That's why people are ignoring it, and which is very unfortunate. But we are struggling here in Delhi, for example, outside Kashmir, to preserve it. We hold so many programs in Jammu, in Delhi, in other NCR regions and other places. We hold some workshops for children, youngsters. But there is no proper, the encouragement or enthusiasm which should have been there with the parents is missing. Very unfortunate situation. Yeah, I can imagine that. Thank you. So any other questions? Hello, sir. Yes, please. मैं रूप किशन सर से एक बात पूछना चाहता हूँ. क्या कश्मीर में जो कलहन ने रजतरंगिनी लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? जी, नहीं, कलहन ने जो राजतरंग ने लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी, और ये दुनिया की एक अकलौती ही हिस्ट्री है जो संस्कृत में लिखी गई है, और कोई हिस्ट्री संस्कृत में नहीं लिखी गई है. इस हिस्ट्री को फिर ऑरल स्टेन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 2 वॉल्यूम्स में, जो काफी पॉपुलर है और हर जगह, हर लाइब्रेरी में है. उसके बाद आर.एस. पंडित ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, और फिर अलग अलग भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है. लेकिन जो कलहन पंडित ने लिखा था वो ओरिजिनल में जो किताब थी वो संस्कृत में. सर, हिंदी में मिल सकता है क्या? हिंदी में हाँ, अब ट्रांसलेशन अवेलेबल है, अब हिंदी में अवेलेबल है, अंग्रेजी में है, कश्मीरी में भी इसका थोड़ा पूरा एक पोर्शन इसका ट्रांसलेट करके J&K एकेडमी ने में छापा है. ठीक है सर, क्योंकि हिंदी में होने से हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हर चीज तो वहाँ पे समा हुआ है, क्योंकि कश्मीर का जो स्थिति है आज के तारीख में नहीं, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है. बहुत एंशिएंट है और बहुत ही रिच ट्रेडिशन है, स्पेशली संस्कृत का बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है. बहुत बड़े नेशनल के इंटरनेशनल फेम के स्कॉलर्स हुए हैं, अभिनव गुप्त, मोहम्मद, शैलेंद्र, शमिंदर, कलहन, बिलहन, ये वो नाम थे जिन्होंने संस्कृत को बहुत कुछ दिया है. और संस्कृत का काफी, वो एक टाइम हम कश्मीर को शारदा पीठ बोलते थे, मतलब इट वाज अ सीट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, ऐसे शारदा यूनिवर्सिटी होती थी जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है. अब वहाँ पे मतलब उसमें जो उस यूनिवर्सिटी में लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड द शारदा पीठ. शारदा पीठ इज अ सीट ऑफ लर्निंग इन दैट पीरियड. वी आर प्राउड फॉर दैट सर. जी, थैंक यू सर फॉर योर इंफॉर्मेशन. Thank you very much. So, Professor Bhat, I think you are going to stay with us. So, if there are questions, you can still take it up at the end. Now, we can move on to the next speaker, Mr. K.R. Sethuraman. I'm very happy that we have
a Sahitya Academy with us. Mr. Sethuraman, are you there? Yeah. Hello. Yeah. Namaskar. My greetings to all participants. Yeah, one moment. So, Mr. Sethuraman is a Sahitya Academy awardee of 2007 for his important work on Saurashtra Tamil English Trilingual Dictionary. Now, we would like to hear your views on mother tongue, the promotion of mother tongues. What are your views? Please feel free to speak in any language. Okay. My hearty thanks to the officials and committee members of Central Institute of Indian Languages, Mysore, for having given me this golden opportunity to address. I am Kutti Sethuraman, Kutti Ramachari Sethuraman of Bangalore, of Madurai origin. I want to honor the spirit of International Mother Tongue Day, so I prefer to address in my mother tongue, that is Saurashtra language. It is an ancient Prakrit language, now living in Tamil Nadu only. I find it difficult to talk in Saurashtra language. It is in reality, average Saurashtras in Tamil Nadu. They prefer to talk in public places in Saurashtra language, Tamil language. They prefer Tamil language and English, educated people. Now, let us pay homage to the late Japan Dr. Norihiko Uchida, who has done laudable service to the linguistic researchers of Saurashtra language. He expired recently. Now, I will begin my lecture. Akila Loka Mai Bhasha Dinnu, Mysore Central Institute of Indian Languages Sarbum, Utsavam Chalaria, Itamam, Saurashtra Bhasha Hor, Prev Dekadi, Moga Bhashana Karatak Anmadi Diras. Very Santosh, Dhanyavad. My Bhasha Menta Kaya, Jene Mai Podumur Hatavaru, Mai Kararia Shabdun Aiki, Paramanandu Pundi, Gita Khadli, Sugam Deki, Bhasha Roop Sikilet, Ave Nuru, Bharad, Ave Faradumli, Mai Yor Reed Dutpe, Bhasha Sikai, Ponte Ursul Obulam, Mike in Nuru, Dukku Silkak and Prevugan Jivan, Ever, Mai Sera Vatabol, Sikada, Sikata Kaya, Bhasha, my Bhasha Minimanan. Porat Hoye Damparin, Prevukan Salabu Killer the word, my Bhasham Atakalla Sud. Elias, my Bhasha. Saurashtra General no, my Bhasha won't test. Saurashtra General no go, my Bhasha won't test. Only one mother tongue, no second mother tongue. Sandarpa Suneli Hali, Charitra reading, Tamil, Dio my Bhasha, second mother tongue, Mellasun, Tele Sarkanha. Howde my Tamil, Tamil Bhasha Sikuna Tago, Amko Jivnam Ni, Ami Tamil Desum, Uji, Jivi, Matti Sara Ikam Horia. Tamil English Bhasha Nadikam Chukuse, Uyi, Ven Hoile Tavaras, General Sankhya, Hadata Bird, Vishram Gadhavi, Adigarin, Alchangano, Tamil Thai Modi Mini, Padu Karasun. Halamko, Kunni Badipuni Mini Hatvi, Saurashtra Samuha Motan Judia. Take a Palano, Saurashtra Samuha, Jana Sankhya, Unase Mini, Governmentum Sangasun. Abuna Sete Saligan, Abuna Sete Saligano, Nihita Hoiletse, my Bhashak Ani, Karantage Margyat Kararani, our Samukas Araskil Vadi, our my Bhashak, the Hirangan, me Saurashtra, more my Bhasha, hold up the Tamil government to Avashangan Gamchuno, minority Bhasha Hali, Patasham, the Pillal Nogo, Sikatak Asaport the Dusratenko, Askita Janago, Sikata Vatkerno. Saurashtra Bhasha Padasalano Manyam Deno, Niji, Saurashtra Bhasha Wood Jade. What I Jade? Is a many our councillor no, MLA no, MP, Mantirin, Saurashtra Samga government Atyarin. In the work Mendrani, Tegahaji, Anatran our my Bhasha Horu, Alachangan Saras, Lipi Sahityam Nihanata Bhasha, Kai Karan Modiki Mini, Kai. Annatranu, Amkavino, Kai Matatonte, Igilino, Kairan, Modi, many Geli Karasan.
माई भाषा आमकां गुर्तू अडयाळम देश माई भाषा आमकां गुर्तू अडयाळम धैर्य तेका हाली माई भाषाक मर्यादा आमी कापाडना ಏನಾಗಿ ಅವರ ಸಂತತಿನ ಉನ್ನ ಮನೋಭಾవం ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವಳ್ಳಿ ಬಾಧ ಪಂದರ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಉಂಟೆ ಭಾಷಾ ಮಿನಿ ಮೆನಾನ್ ಮುಸುನ ಲಿಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕೌರಾನ್ ಭಾಷಾ ಸೊಗನ್ ಲಾಗಸ್ ಮಿನಿ అంటే सर्व कलाशाला मोठा कोरप निहित वाता केत्यास तेले घडी मग सौराष्ट्र समूह बेई आरायची PhD आरायची करतो कोरमेगनो मी लिखे तमिळनाटली सौराष्ट्र मुळु वरलाறு सौराष्ट्र मोमोडी अगरादी सौराष्ट्र ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी देकड़ी विवाद क्रियास ಅವರೇ माई भाषा कौन स्थितिम से मिनी हरडो विषय कळानातनो दोड़ा झैली इस पिसान सोगनो अता करना रहते बेड़ो मुड़ीवारी माइनॉरिटी जनरल होए हमको विचार लगस रियली भारत सरकार हमको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मैंने उरिमे दीरास लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मैंने उरिमे दीरास तेल उरिमे खड़िगेनो हमको ಅವರೇ ಪಾಠಶಾಲಾನು ಧವರಾನು जो आम्ही सुयशगन निर्वाह केले आवरासी तेव्हा राज्य सरकार अड्डा पडतो मुसुना तिसर राहते ಒಳಗ तेले ಅವರ ಪಾಠಶಾಲಾನು लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मेनी आम्ही सत्य आहे ಅವರ पिल्लांना आम्ही काढत मुसाई हेदी कोणीच कळरानी तेले मोठे एकैकन विचार लागार संको और समूह मोठान स्थापित करी रिया दौरान उलटमून आणि स्वेच्छगन निर्वाह करता मुसरिया रियेदी मिडी तमिळनाडु गवर्नमेंट ಅವರ माई भाषा ಕೊಡತಾಗು उन्नति करतागु हिंदलेंकु कोन्नी करारनी हमरे समूह मोठान माई भाषा औरिया अपायम काळना तक से इस रियेदी सौराष्ट्र माई भाषा तिगुचर होडई में आम्ही काय करता मुसाई मेनी भरती दिलेत दिन गमडारास ये संपो है समाचार ना देवादिनंकन लंडन डॉक्टर H.N. डांडेल जपान डॉक्टर रीक उचिदा आरायची केली हमको उपकार कररास तेनका आम्ही हवडन जावडफाना सौराष्ट्र भाषा वाता करणार सुमार देशलेक मनसन तेनका पूर्वीगम उत्तरम सत्य प्रसिद्धी होये सौराष्ट्र देश ते सोमनाथ धवरा द्वारका धवरा सत्य जड़ पंजम इत्यादि कारण हाली मुझे देश गांव सोडी भराड़ औडिया इनका जोड़ कलाचार बलम से हाथ मगनत तोड़िल से राजान इनका अभयम दियास पादगापु दियास भर्ती को सौराष्ट्र जनरल नो पशुत कंडा बोटल विनि दियास तेंदुस री हिंदलंग राजान आदरो रिया वरस स्थलम इनक्यान सर यन पोळगतगु संदर्भम दुकुनी तेगा हाली सौराष्ट्र समूह चरित्रम सौराष्ट्र भाषा लवगास अन्नतरानु कळानतक जेडी माई भाषा की निजीयेदी समूह अंदस्तु एल्ले ओटे पट्ट क्वेश्चन मार्क तैरास वेदर द स्टेटस इन द सोसाइटी आर द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज मदर टंग समूह अंदस्तु मुख्यम कन मेडली जीवनम चलता गेले आवडास माई भाषा वृत्ति करते हम जीवन देरानी पारंपरिक स्वत्तु माई भाषा मर्यादा कापाडना मेहनती चला माई भाषा चिंतना नियनात्मक साहित्यम करण मुसुना माई भाषा मावी नो तन चिंतना जुक्कु उन्नसे तन चिंतने करारी ऊरावी नो भराट నుంచి ansari పొల్గరే आली तमिळम योसन कररास तमिळम बत्त कररास चौदत्ताडु तमिळु तेगा हाली माई भाषा तेंका चिंतना करता कष्टम लागरस सम माई भाषा जीव कलाचार अंग जीव की नांगु उंटेस्कन हेदिस अनि हातम से एल्ले सूक्ष्मम एल्ले समूहम तानम पिडिपोडारनी तमिळनाडु निरंतरंगा जीवन निवेळ फरादुम तमिळनाडु निरंतरंगा जीवन मुसा हलादुगु सी तेंका उटे साहित्यम करना नाता उटे अवश्यम अवार्य नीना येसनदी
ಬಾದಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಒಳಗು ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಗು ಕಾಯ್ಗಾರನು ಆ ತಮಿಳ್ಮುಳ್ಳ ತೀಸ ಕಷ್ಟಂ ಬಿಡ್ರಿಯ ತೆಂಕ ರಾಜಾಂಗ ಅತ್ಯಾರ್ ಅಬ್ಬೆ ಹೊಲ್ಲಾದಗು ಸುಂದರ ಅಬ್ಬೆ ಹೊಲ್ಲಾದಗು ಲಿಗುತಾಮುಸ್ ತಮಿಳ್ ಭಾಷಾ ಮಗೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರ ನೆಗಳ್ರಿಯ ತೆಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಅಬ್ಬಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾದಿರಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನ್ಕ್ಯಾನ್ಗೂ ತೆಂಕ ಕೊನಿ ಪವರ್ನಿ ಅತ್ಯಾರ್ನಿ ತೆಂಗ ಅವಿನು ತಮಿಳ್ ಚೌಧರಿ ತೆಂಕ ಜೀವನಂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಗಿನ ತನ್ನ ಕಾಯ್ಗಾರನು ಹೇಳ್ಬಂಡೆ ಗೊಮ್ಮಾನಂ ಅವರೇ ಮೊಟ್ಟಾನ್ ಮಾಯಿ ಭಾಷಾ ವೃತ್ತಿ ಕನ್ನವನ್ ಸಾರಾಸ್ ನಾವತ್ತೆಂಚು ಗಾಮನ್ ಸತ್ತೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮೂಹ ಮೆನ್ಕ್ಯಾನ್ ಭತ್ತ ಕೆರಾರಿಯ ಪಾಣಿ ಮಚ್ಚಾಸ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ various dialects in various places. Marcharis. Tegahali, Denikhani Angum Sagajam Horani. Marriage alliances are not easily available because of their dialect. Go through here now, Pusta Agaradi Mini, not Pusta Vimi Bharat Podanjos. Tegahali, Samuga Utrumai, understanding why many have for us. Kaya Manadi. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮೆನದಿ ಕಾಯ ಅಡ್ಯಾಳ ಮೆನದಿ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಏದಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಕೋನ್ ಪೈನೆ ಸಿಕ್ಕುಲುವಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ನಾ ಈಗ ಅಡ್ಯಾಳಂ ಕಾಯ ಮೆನದಿ ಘೇರು ನಾವು ಇಂಟಿ ಪೇರು ಇಲ್ಲತ್ತು ಪೇರು ಘೇರು ನಾವು ಸೆತ್ತೆ ತಲೆ ಘೇರು ನಾವು ಕಳೆಯದಿ ಈಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾದಿನು ಉಂಟೇಗ ಕಾಯಿ रिलेशनशिप गुरव काय स्वंतम काय बहन की यहाँ फराडू देवलाई करता मन क्या की मैंने देखी धरता मुसाई जगह हली ये सौराष्ट्र कल्चर ये सौराष्ट्र कल्चर उन्ना पड़ले आवाज सुनदी भाषा जड़ाई अष्टी जड़ाई तेंग मध्या जड़ाई घेन जड़ाई साकालमु जड़ाई रोमानमु ಮಾಯಿ ಭಾಷೆ ವೃತ್ತಿ ಕಲಿತು ಜೇನೆ ಮಾಯಿ ಬಾಬನ್ ಹೋರ್ ಕಳ್ಳುನ ನಲ್ಲದರ ಕುಟುಂಬಂ ಪಲಗಲಿ ಕಳಗ ಮನಸ್ಸು ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಮಾಯಿನ ಜೋಡ್ರಿ ಕಲಾಚಾರ ಸಿಕ್ಕುನ ವಿಶೇಷಕನು ಬಿಡ್ಕಿ ಪಿಲ್ಲನಿಗೂ ಅವರ ಭಾಷಾ ಜಾತಿ ಆಚಾರ ಸಿಕ್ಕಡಿದೆನ ಚೋದೆ ಬಿಡ್ಕಿನು ಹೊರಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರಂಗ ನುಡಿ ಹೊಡೆತ ಕಲಾಚಾರ ಸಿಕ್ಕನ ಹಾಲ್ ವಿಪರೀತಂ ಹೋಸ್ ಒಂಟೆ ಬಿಡ್ಕಿ ಅನ್ನತ್ತರ ಹೊರಾಡು ಕೆರ್ಲಿ ದಾವಿಜೀದಿ ವಿಪರೀತಂ ಹೋಯ್ कोनक मनदी माई कलानातक बेटिक वार्तपी जान मुसुना we lose Saurashtra culture and mother tongue when our girls marry other language boys who are having different base motives. Gomanam avare mottanugu ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕಾವೇರಿ ಅಮ್ಮನಂತನು ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ सौराष्ट्र भाषा लिख रहा सी वचन नड़ाई लिख रहा सी तेना अस्की अंबुलमर अम्मा नदीनु गोमानमु तेंक अंदस्तु देते वटकेनी तेबळगु येनु भुवी येनु तेंक वेदांत सौराष्ट्र भाषा मुसी कड़ी इदे येनु तेंक चोक जीवनम येनु नुमके पडाड्रास self-confidence our widows, they got self-confidence after getting Vedantic lessons from Kuti Kaveri Ammal, Madurai. The Kuti Kaveri Ammal avinu think natyasmi. Arasiyal Kalachara Talevargal Padamuno to Mitholino, Gomanumo, our Motanugo, Anmiga, Arasiyal Kalachara Talevargal Padamun to Mitholino. Sotugan Kapadna. is a what decadias. Madurai Kalachara Seva Ratana Chitu, Stike Narasimachari, Sri Venkatam, then Adino what decadas, Sky Venedi, me like Bogun Pura, you know, Santa. Me like Bogun Pura, Kadias, Kadigino, the sector Kadias, what a sector, you know, bundle Gandhi, Thodia. Yella Vina or a Parambara Sotu, Saurashtra Hasham, Likiria. सौराष्ट्र कलाचार को लिखिया बोगु नवीन ಅವರೇ ಕುಟುಂಬ ಸೊತ್ತು ನಾನು ಇಂತನ ವಾಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಕವಿ ವೆಂಕಟಸೂರಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಜಗದ್ಗುರು ನಡನಗೋಪಾಲ ನಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಕ ಪಡಮನ್ ಅವಶ್ಯಂ ಗಮ್ಮಾನಂ ಲಂಬಸೊಣ್ಣ ಮೇಧಾವಿತ್ವಮು ರಾಮಾರಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಬಂಧು ಎಲ್ ಕೆ ತುಳಸಿರಾಮ್
శ్రీ కేవి రామాచారి, శ్రీ ఎన్ఎంఆర్ సుబ్బరామన్, ఇంకా ನಾವು ಚರಿತ್ರ ಅವರ ಪೊಲ್ಟಮನ್ನು ಅರಿಭವಂ ಕೆನ್ನಂ ಭರಾಡ್ ಅವರ ಪೊಲ್ಟಮನ್ನು ಅರಿಭವಂ ಕೆನ್ನಂ ದೇಶನಂ ಗಾಮನಂ ಭರಾಡ್ ಗಾಮನಂ ಭರಾಡ್ ದೇಶನಂ ಸೇತೆ ನುರುನುಗು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ವಾತಾನ್ ಕಡಿದನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾಚಾರ ಮಹಾನಾಡು கருத்தரங்கன் அடிக்கடி சல்த்த கரணம் ఇలా மாதிரி కొన్ని కేరళాని ఇలా విషయం కాణతను సంబంధం నాతను కూడా అవిను మహానాడు మిని తైను ఇంకా ఆస్త తిరుచులరాస్ ఇంకా మొట్టప్పన్ పొందులరాస్ సాధారణం ఇంకానుగు మగవినతే దుర్బಣ್ಣుగు నడుతర వర్గం సత్యంక కొన్ని తాం వాట్ దేరాని తాం సెర్చులతగు ಮೇಡಮು ವಾಟ್ ದೇರಾನಿ ತೆಗ ಹಲಿ ತೆಲ ಮಹಾನಾಡು ಅವಿನು ಕಾಯಿ ಕಾಮ ಕುಚ್ಚಿ ತರಿ ಕೆರಾಸ್ಕಿ ತಲಿ ಚಾಲ್ತಾ ಹೊರನಿ ತೆಗ ಹಲಿ ಆమె ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮೂಹము కొల్లావత్తకు అల్లదే కాల్పడతకు ఆమె అస్కితను కోరు ఆల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది డౌన్ఫాల్ ఆఫ్ సౌరాష్ట్ర కమ్యూనిటీ ఆర్ ది greatness of Saurashtra community. Digital, आम्ही इथे घाली कोणती जड पोडीचे पोडी वातान करा हना रागल्लो हना डिजिटल युगामगो फयधानगो ಅವರ ಲಿಖನಾರ್ನು ನಗುವ ವಿಷಯ ಖರಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಕರ್ನ ಅವಿಜೆ ರಾಮಾಯಣಮೂಸಿ ಒಕ್ಕವದನು ದಶದನ ರಾಮಾಯಣ ಲಿಖಾಸನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅದೇನು ಖರಡಸನದಿ ಸೋದನ ಲಿಖಾಸನ್ ಆಗ ஏற்கனவே எஸ்டாப்ளிஷ் விஷயமும் லிக்குனாத்தகு நொவ்வ விஷயமும் समूह सीर्दिर्दम विषयमु दुसरे लवगास गामु सते लवगास कायमिनी लिक्यासनदी 14 तक मुसई अलग 14 तक पीरियड पडत याकंटे मुख्य विषय गमचुव येसु क्रिस्तु यूद समूहम चरतेना ಬೈಬಲ್ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷಾಂ ಸೆ ಧೇರಿ ಮಿಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಮದಮು ಚೆರತೆನು ತೆಂಕ ಮಾಯಿ ಭಾಷಾಂ ಬೈಬಲ್ ಚೋದುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೆರುವಾಯ್ ಮದರೆ ವಿಲ್ಲಾವರಮು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಚರ್ಚ್ ಬಂದಿರಾಸ್ ಇತರ ಬೈಬಲ್ ವಸನಮು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾಂ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಲಿಬಿನ್ ಸೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮೂಹ ಧೌರಾನಮು ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಇಸಮಾರಿ ಹೋಡುವಾಯ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಂ ಲೈಬ್ರರಿ ಅವಶ್ಯಂ ಥೌನ सौराष्ट्र समूहमु हीनु साबिदं के दौरानु सुमार 300 है 300 community temples are there and Saurashtra people they find pleasure in investing to establish temples and establish temples and conduct festivals and general feast. எழுத்தாளர்னு ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಚ್ಚಿ ಕಾಯ್ಕರ್ನು writers, what are the duties of writers in this respect? How to develop, how to promote their mother tongue. It is the burning question. ಏರ್ಕನೇ ಮொழிபெயர்ப்பு ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಸೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾಂ ವೆಂಕಟಸೂರಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಧೀನು ಟಾಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ರಾಮಾಯಣಂ ಲಿಂಗು 9 ರಾಮಾಯಣಂ ಸೆ 9 ramayanas available in Saurashtra language. But who is to read? How to read? They are not trained to read Saurashtra language in schools. So only Saurashtra language is existing in spoken language form only. Really, पुस्तक खड़ी चौधरी आदुर्वा करनारनी द्रव्य सहाव करनार उन्ना और लिखनार न तमिल मो पांडित्यम पंजास तेनु अस्की तंग सोगनु तमिल पांडित्यम पंदिरास Saurashtra students, they are in no way inferior to their classmates of Tamil people. They are highly intelligent and
they learn any language, any profession. There are Saurashtra scholars, particularly I may mention Pattimandram Pugal, Dasu DKS, Dr. Ira Mohan. Tenka sono judanu se Tamilam Sahityam Garedi, tenka navu kasu abe. My bhasha प्रयोग करो सौराष्ट्र पुस्तकों प्रसुरम करले से हमने वो हाथ चौले से our writers they belong to most of them, they belong to middle class people. They spend from their packets and they publish books on Saurashtra language, literature, culture. But people, they don't extend their Saurashtra people, they don't extend their support by way of support or by way of reading or by way of preserving the books. Rajya Sarkar ele likunarugo nidhi adugo diyeti sahityam burti. State government should extend their helping hands to encourage our writers of Saurashtra people. Saurashtra bhasham sahityam kartagu sumar avre likaranugo tenka kudumbamu samu motanu aduro derani kai karanamenadi ಏನೋಸ್ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೆ ಒಳಗು ರೇಣ್ ಖಾಡಿಗೆನೋ ಪುಸ್ತಕ ತೈನೋ ತೆಲೆ ಭರಾಡ್ ವಿಕಾನ ತಗು ಗೊಮ್ಮಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಹುಡುಗು स्पेस प्रॉब्लम थाम नहीं साजाम तेला डिस्पोज करना पड़ा रस तेवळागु लिखनारनु गविनु मुन कष्ट लागा रस महाभारतम सौराष्ट्र भाषामु पांडवन कथा मिनीनो कसिनांदम माते मोट्टा लिखनार लिखिरास प्रसुरम होइरस फलाना बेनी पेन लिखे झुक इष्टम बोडी तेंक झुकदनो हन्नव कासु उन्नसतेनो वसदी उन्नसतेनो रेदी मल्ली कष्टम बोडीतेनो पांडवन कथा मिनी अद्भुतंगा लिखिरास पहले चौदनारनी खण्णारनी हाली तनावीनु मुन्ने कष्टम बोडीनो इंद बेडरूम पोडरास तेंक कुटुंबम सेतन तेंक आवडे आर्दल संगिलीनो से श्री एन.एस. विश्वनाथन सौराष्ट्र भाषा कवि साहित्यम कर रहा लघुत्तम सूर्य ज्ञानेश्वरन शिलपदिहारम सौराष्ट्र भाषा साहित्यम करी ट्रांसलेट करी भराट छोड़ रहा सौराष्ट्र कन्नदासन मैंने नाव पड़े अपन राज श्री नीलाराव नाटक साहित्यम करी प्रसिद्धम कर ले अवरास सौराष्ट्र फिल्म बड़ा धर रहा से सौराष्ट्र नाटकम चलता कर रहा से सौराष्ट्र फिल्म मुदल्ला भी नो तेले तैयार करी अस्की थिएटर नवीन तनो भराड आणरा से तेले तेले मुट्टा काम अदीनो स्वच्छम तन उराव से तन मला केना मनेदी और मेनक्यान इकूदन चेरी नो हन्नव कास सतेनो इकूदन चेरी नो ओंडा चैनल टीवी ओंडा चैनल हरमंगरेदी इकूदन का लिकुनान पूरा ओंडा संदर्भम दतम सै से संदर्भम दिले दयदी और भाषा होडई और मेनक्यान मर्याद चढ़ई साहित्य अकादमी एवं आदरो कौन देते मैंने दी सेंट्रल गवर्नमेंट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में हमको ओपिलीनो तेना हमको जुक्को आदरो दी रासी और दौरानो और पोल्टमनो चलता करता अभी गवर्नमेंट क्या अड्डम पड़ना मैंने इन ऊरी दी रासी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अमी सतन उनका पादुगापु देते हुए पोरुप कौन मैंने दी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जनाधिपति सी तेंगो जोड़ हमें मेले से नहीं थे नेरेडी का नहीं नो सो माडा उंडा उंडा कमिटी धटरा धटी है तुमका काई उन्ना से तुमका काई प्रॉब्लम से मैंने इनो पूछी इनो तनो चलता कर रहा केवल अगु और सौराष्ट्र में क्या जी तेंको कौन अगर इनो और समाचार काटते मैं तो देखी धीरे इनो और समूह मोटान केरा से नदी निश्चय मंगा इनो और समूह समाला होता मुझसे और भाषा साहित्यम ध्यान होता मुझसे अंगूठा मोटा काम कर रहा से या दिन चलता होना तो काम इन्हें खाई में नदी
आम्ही भाषा कुची काम करतना लिखनारनं शोधनारनं तिकोदना विनो वेस्ट है मन क्या नो मैंने मन क्या जो नाव पोट्या ये संदर्भ में भी भारत सरकार उनका काय रसनिधि तेरी और मन ज्ञान रिप्रेजेंट कर रहा है तेरा साहित्य अकादमी में भी भाषा सम्मान अवार्ड काय मनिधि सौराष्ट्र भाषा गुची कौन पाठ पढ़ रहा है कौन कस्टम पढ़ रहा है तेंका अभी सम्मानम धैर्य तेंका परिसु धैर्य काय मनिधि 50,000 पन्नास सासर देते मिनी अनाउंस किया करते हम कमिटी मेंबर जूरी नवी उंडे देगा 50 सासर देते नको अंगोट देगा मल्ला चिचुला में दीदंगा दिव्या क्या मुदल अभी घनम पंदते नुकि KR सेतुरामन पुट्टिन सेतुरामन तेंका घनम करासी टाटा सुब्रमण्यन तन कालम हुआ तेंका घनम करासी ते हल्लादु तेले वर्ष धैर्य भाषा सम्मान विरुद्ध ना तेले विरुद्ध दिया हाली वर्ल्ड पूरा भी सौराष्ट्र लैंग्वेज भी उनसे से तमाम लिटरेचर से साहित्यम से और कल्चर से तमें ज्ञान से तेंका अभी हमें आराய்ச்சி करना में नहीं एक फला झूदन आराய்ச்சி करता हो रहा सी मिलिके बगुन पूरा भी तन खड़ा रहा सी आराய்ச்சி करी PhD खड़ा रहा सी MPhil पट्टन खड़ा रहा सी नन्ना नोर मुल्ला भी इन प्रोजेक्ट दे रहा सी इला प्रोजेक्ट देते हम सौराष्ट्र भाषा कुछ प्रोजेक्ट करना में नहीं तुम सेतुरामन जोड़ जाओ मैंने झुकने का धड्डे रहते बाल के पूरा भी मिलिके बुक्स नवी पढ़ी प्रबलंग से चले लेवता वर्ष अभी ले जन में झुको वर्ष जन में अमी मुनर्ची करना केरला से त्या हलादु मग जूरी गन्नंताई अत 7 वर्ष मुंदड़ी TR दामोदरन कोयंबतूर सौराष्ट्र सुंदरराजंती ಎಲ್ಲ ದಿ ತನಕ ವಿರುದನ್ ಹಡದಕ್ ಮಿ ಅವಿ ಸಿಫಾರ್ಸು ಕರೆಸಿ ತನಕ ಒಂಟೆ ಲೆಕ್ಕು ದೀರಾಸಿ ಎಸ್ ಅದ ಕಾಯಿನ అనేది ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ್ because of ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ್ award our language Saurashtra language my mother tongue has become very popular and people they are coming in large number to do research and I am guiding so many people without expecting anything in return. Likewise I have recommended the committee Bhasha Samman committee recommended 2 candidates, 2 people who are highly cultured, highly literary, having literary meritorious character. They are TR Damodaran, Tirupkonda Damodaran, Coimbatore, Saroja Sundararajan. Tegahali, Nogwa Likanana, because of this gesture, people, new writers, they are coming forward to do, to publish their writings. And they are hoping they will get such chances of getting Bhasha Samman awards in due future. Shrestha Saurashtra Sahitya Sabha, Shrestha Saurashtra Sahitya Sabha, Saurashtra Sahitya Sadas, लिखनारनु सदस आज के दिले से राज्य सरकार सौराष्ट्र लिखनार संगम थोड़ी राज्य सरकार लिखनारनु लिखना मैंने दी संगम उन्टे तेंका रिकॉग्नाइज करना लिखनार नको रिकॉग्नाइज करी तेंका कुछ मिनोड हॉस्टल थोड़ी गिनो तनो स्टेज गनो आये साहित्यम लिखता गवीनो काय करने कर तेरस मैंने दी अवश्यम निश्चयम का नवीनो अवरे माई भाषा वृत्ति होता वो तो कोड़ो चांसेस है चले एक जुक्कू
Kritankia, Nandis Konka Sanganam, the Central Institute of Indian Languages. The Central Institute of Indian Languages, they conduct a seminar, they conducted a workshop on Saurashtra language and improving the script problem in Devanagari and Tamil, etc. And they are purchasing Saurashtra books also. So we are highly grateful to Central Institute of Indian Languages, and particularly our thanks are due to Mr. Prem Kumar. He has done wonderful service by way of encouraging all the writers. So I'm happy to conclude the organizers and the session head, coordinator, and everybody connected in this matter to encourage my bhasha, that is Thai Muli. And we have not lost identity, though we live in Tamil Nadu, and we have taken the task of working for the literature and culture of Tamil people, and we have produced the freedom fighters. Our Saurashtra community contributed a lot and contributed wonderful freedom fighters. All these matters, we have to convey to the researchers so that they can proceed further. Now they are helpless. All researchers, they are helpless because our Saurashtra community elders, they are not understanding the real spirit behind it, and they in politics also they are not shining because they shed their identity and then playing the role of politicians. That is the problem. They should openly declare, I am a Saurashtra, I belong to minority community, so we extend all help to the development of language, culture, everything, and not losing identity by the minority community, minority language is a wonderful thing in research world. I must thank all the participants, all the listeners for all this wonderful work you are doing. I'm always thankful. Further, in future also, I will cooperate for all these laudable attempts. I particularly thank Uma Papusamy. Already, I am familiar with this man. When I visited and stayed, she encouraged all the participants. Further, once again, I thank you and the Central Institute of Indian Languages. Thank you. Jai Bharat Mata, Jai Mother Tongue Day. All the mother tongue people, they find support from you. Thank you. Thank you very much, Thiru Sethuraman avargal. ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. It was a wonderful talk. Though most of us cannot understand Saurashtra, but we were able to connect with you emotionally and could probably predict what is the essence of your talk. In between, you gave some English statements so that it was something we understand, like mostly you are trying to fight for the identity of Saurashtra first, and then how you can, how young people can use Saurashtra in writing, and they should develop love for their mother tongue. I think that was the essence of your talk. I now invite questions. Like we have Shri
Vishram Gadhavi with us, who speaks Kachi. I think he must have followed your talk. He has already raised his hand. Shri Gadhavi. नमस्ते उमा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सेतुरमन जी प्रणाम। Yes. आपको। थैंक यू। वंदन। मैं आपका पूरा लेक्चर ध्यान से सुना जरूर, लेकिन बहुत समझ नहीं पा रहा, थोड़ी भाषा की बैरियर की वजह से। लेकिन जो सौराष्ट्र की बात की आपने, सौराष्ट्री भाषा की, तो तमिलनाडु में वहां भी कोई सौराष्ट्री भाषा है या गुजरात की सौराष्ट्री भाषा से कोई आप ये भाषा ताल्लुकात रखती है या सिर्फ नाम सिमिलर है? Actually, in reality, most of the people, they are not aware. अगर साहब आप हिंदी में बोल सकेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हिंदी में बोल सकता नहीं, हिंदी जानता हूँ, मगर हिंदी में बोल नहीं सकता। English में, if you put questions in English, I may be able to convince you. I understand your, but I understand Hindi. In Tamil Nadu, nearly more than 10 lakhs people, they are Saurashtras living. The name Saurashtra is misunderstood by others. Have you come from Gujarat? In the original name of Gujarat was Saurashtra. Even today, 5 districts in Gujarat state, you are finding the name Saurashtra, but the language is not Saurashtra. By because of political changes and political urgence, they have to speak Gujarati, even though they have separate identity. Gujaratis and Saurashtris, Kathiawadis, they call Kathiawadis. They have different identities, and in status also, I heard Gujaratis, they think they are superior to Kathiawadis. But Gandhiji, he's a Saurashtrian. Most of the people, they are not aware. Even our history books, they don't give such facts. Gandhiji, he was born in Kathiawad. People, they don't know the old name Kathiawad. Kathiawad is a popular name, of course. But people, otherwise, they record Gandhiji is from Gujarat. That is not correct. And Somnath is there, Dwaraka is there, Surat. All these people, these are the original homes of Tamil Nadu Saurashtrians. Actually, they had to migrate because of Muslim invasions and because of famine or some diseases. Most of the people, they had to leave their mother country, and people, and they are very staunch Hindus. Culturally high standard. So they are having, particularly they claim Brahmins, Saurashtra Brahmins, they claim. And Brahmins, they should not compromise with undesirable elements. So they have to live with their own livings, or their earnings. So Tamil Nadu Saurashtrians, even today, they are independent people. They don't depend on others for anything. Just like gateway community, nowadays you find new apartments culture, gate communities. Like that, Tamil Nadu Saurashtra people, they are living in Tamil Nadu. Though they are living in Tamil Nadu, they enjoyed their patrons, kings, they were patrons. From the beginning, kings they invited, and they exported. They exported cloths, jari cloths, and they earned a lot for the. How many years ago? How much? How many years ago? कितने साल पहले? 800 years. Approximately they are doing, and extensive research is needed. People, they are not coming forward.
whether Saurashtras, most of the Saurashtras, others they call them Tamils. They are included in Tamil population. It is not that is nothing wrong in it. And people who patronize, they have to be grateful to them. They are staunch devotees of Krishna, Rama, and Saivites. All this there, but they are mingling with others. They show hospitality. They are nobody will go against them. See, whatever things you create caste problems, community problems, nobody will come forward to go against Saurashtra people. To that extent, they are highly cultured. But nowadays, the Modi also, our Prime Minister Modi, he appreciated Saurashtra people. We are very happy to hear the name Saurashtra, even though we use Gujarati only, like that. Now people they are going to on pilgrimage like that, Somnath, Dwaraka, and other places. Just like Kachi, people, North Indians, they come to Rameswar and Madurai. And in Madurai, they are in large number. And the development of Madurai city is due to the great workmanship of Saurashtrians. Wow, very good. They improved the economy, they improved the culture, they improved the Sahitya. Tamil, most of the scholars in Saurashtra scholars, they have contributed a lot for the development of Tamil people. So nobody will go against that. To that extent, people they appreciate. They know that they actually Saurashtra people, they won't go to anybody for any beggings or favors. They will do favors to others. Self-respect people with devotion, and they have established 300 temples of their own, community temples, which you can't hear such news with regard to other communities. Okay? Okay. I think I want to compliment Sethuraman for an excellent talk, spoken from the heart and giving us a lot of understanding of a very interesting case study of these people in Tamil Nadu. This community is of extreme importance for theoretical studies also, because Prof. Pandit, the famous social linguist, he started his social linguistic studies with the Saurashtrian people in Tamil Nadu. And he made very important statements about how in India people maintain their language even after centuries and all that. So in fact, your case study is the most important. And I think you have done, it's a case fit for proper language planning with you, in which you will take the leadership. And it also raises a very interesting issue that you may not be most competent in your mother tongue. So competence is not a criteria for judging mother tongue, but identity is the main criteria. Yes. In fact, day before yesterday, this was the topic that in Hyderabad, which Imtiaz had arranged, Tobe Kangas was speaking. She said, identity is primary, not competence. You can see that you are more competent in Tamil, but your identity is Saurashtra. So we have to work to enrich your language now. Work for the development of your language. And I think CIL should stand wholeheartedly with the community and do all that is possible to develop materials, provide online teaching, and stand with this community will do us proud in case of language planning. I think I congratulate CIL for standing so firm. I myself have come to Madurai with this. Subbu Krishna, our friend, was involved so long with that. We were coming there. Yes, so we have come there, and I think this is a perfect case, and it will gradually you can sensitize the Tamil Nadu government to look differently at its own minorities. You know, they have to think about the tribal minorities, Saurashtrians, Telugu, many other minorities are there. They are always into the politics of Hindi and Sanskrit, but they have done their case of looking into the minorities leaves a lot to be desired. So I think we should pick up this case of a very harmonious community, which is contributing to the growth of Tamil also.
Tamil also. And Yes. yes, they need, the Tamil people now need to contribute towards the growth of these people. Yes. So we need to take this sense of gratitude. We should feel the majority of people should reciprocate with gratitude for working for the minority and for their cause. And I think CIL can play a very educative role in this. And it can, this one case study of Saurashtra can offer entire lessons to men in the process. So I would want CIL to take this earnestly, put resources, people, and you have an officer like Prem Kumar who's from the community. You must wholeheartedly work for the cause of this community. That is my suggestion to all of you. Yeah, thank you, Professor Sachdeva. CIL has already taken up some initiatives in supporting research on Saurashtra. A dictionary was also prepared through a series of workshops through Prem Kumar, of course, and Shri Sethuraman was very much there. We are trying our best, and I really feel we should do much more. After listening to his dialogue and your interactions, we will take it up. We will see what we can do. Yeah. Thank you. Yeah. We should have a program called Designing Multilingual Education for Saurashtrians. And that will be a case study for the whole country to take. Yes, really, okay. We are ready to work on that. Already we already started our work doing on Saurashtra language. Oh, yes, Prem, I would like to offer my free services if it is of any use to you. I will like yes, to. Thank you so much. Thank you for your support, sir. Okay, all right. Okay. Thank you so much, Sethuraman. I'm very proud of your presentation. Yes. Very kind of you, sir. Yes, very nice. Yeah, they were. धन्यवाद जी. धन्यवाद जी. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोले आप. बिल्कुल दिल से बोले आप. पूरा आप समझते हैं. पूरा केस को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आपने. Okay, very kind of you. Yeah, thank you. So, any other questions or feedback? Madam, can I summarize something about only 2 minutes because we are already running late. 2 minutes. Okay, okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Actually, sir, Sethuraman sir has given some points. I would like to summarize something a little bit, not much things. He summarized that Saurashtrian has to say that only Saurashtra have only one mother tongue. They are not having Saurashtra Tamil as a mother tongue. From birth to death, Saurashtra speak their mother tongue in their hometown. So community leaders, institutions should take a step to develop the language. The government also should support to teach their language in their respective educational institutions. So many writers are writing about the Saurashtra by the Saurashtrian writers, but there is no readers. When we see that, for example, there are 9 translation work of Ramayana. It's available in Saurashtra, but no readers are there to read that document also. So many of the things Randall and Uchida has done a lot of work for Saurashtra languages. He has even Uchida sir also has written a folklore material of Saurashtra language. And also they have many of the things they are using the language in different domains, like they are developing some cinemas. They have some channels also. They want to develop some channel. So there are a lot of things their people are interested to develop their languages, but some of the recognition should be there for them to develop the languages. Even the government has given some recognition by giving Bhasha Samman Award. So the people started to writing to develop their language in like literature and other material on Saurashtra languages. We have to write a letter to President of India about the language status and development of languages. Then only we can get some support from government. So this is a brief summary of the Sri G.R. Sethuraman sir. I would like to share with you. Thank you very much. Thank you, Prem, for your wonderful briefing. Now we move on to the next speaker. Sethuraman அவர்கள் ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு தான் சொல்லணும்.
மதுரையில வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். வாங்க. இல்ல மதுரையில இல்ல, இப்ப நான் பெங்களூர்ல செட்டில்டு. Okay, then we will meet you in Bangalore and we will invite you to our institute for other dialogues. Namaskaram. Yeah. So now we move on to the next speaker. Of course, the session is getting interesting and we are hearing different views from various people. Now we will move on to Srimadi Shakthi Jyothi. Srimadi Shakthi Jyothi, irkingala? Yeah. Vanakkam, Tirumadi Shakthi Jyothi avargal. I would like to briefly introduce her. She is a Tamil writer. She is widely known as a poet, writer. Also, she has innovations in farming technology, and she is a well-known social worker as well. She lives in Dindukkal. She has a PhD from Sangam literature. So she is well versed in classical Tamil. She has authored several articles on different songs, modern literature, even water management, environment. And her main strength is in composing poems that combine women and nature. So பெண்களும் இயற்கையும் இந்த தலைப்புல நீங்க நிறைய எழுதியிருக்கீங்க. So I would like to now invite her to interact with us. So Shakthi Jyothi, நீங்க தமிழ்லயே பேசலாம். I will afterwards brief the audience in English. She is more comfortable in Tamil. So உங்களுக்கு எந்த மொழியில பேச விருப்பமோ அதுல நீங்க தாராளமாக பேசலாம். என் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இங்கு வந்தமைக்கு மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆடிபிளா இருக்கா? ஆடிபிளா கேக்குதுங்க கேக்குதுங்க. ஓகே, நான் கொஞ்சம் வால்யூம் வேணா வச்சுக்கோங்க. 1 செகண்ட். அனைவருக்கும் வணக்கம். உலக தாய்மொழி தினத்திற்காக இந்த நாளை ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் செஷனாக உருவாக்கி இந்திய மொழிகளில் மிக முக்கியமாக குறிப்பிட்ட பங்களிப்பை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிற பலரையும் அழைத்து இந்த செஷன்ல வந்து ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மைசூர் சிஐஎல்ஐ சேர்ந்த டைரக்டர் மற்றும் செயலர் மற்றும் ப்ரொஃபசர்ஸ் யாரெல்லாம் இதில் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் என்னை இந்த நிகழ்வுக்கு அளித்தமைக்கு என்னுடைய நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சங்க இலக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய ஒரு கோர் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது எனக்கு மட்டும் கிடையாது. தமிழ்ல யாரெல்லாம் எழுதுறாங்களோ பேசுறாங்களோ அல்லது எழுதவே இல்லை அவங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட, கல்வியே இல்லை அவங்க வீட்டிலதான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட, தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் உலக மொழிகள்ல மிக பழமையான ஒரு 2500 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இந்த மொழியிலிருந்து நம்ம வந்திருக்கிறோம். நம்முடைய அடையாளம் என்பது தமிழ் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமாக நம்முடைய பங்களிப்பு நிறைய இருக்குது. எந்த மாதிரியாக இருக்கு அப்படின்னாக்க, இந்த உலக மொழியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் பல்வேறு பண்பாட்டு அமைப்புகளை உருவாக்கி கொடுத்த இடத்தில் தமிழுக்குங்கிறது ஒரு தனித்த இடம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த மொழியிலிருந்து நான் வந்திருக்கிறேன், இந்த மொழியினுடைய அடையாளமா நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுல வந்து எப்போதுமே எனக்கு வந்து ஒரு தனித்த ஒரு பெருமையும் ஒரு பெருமிதத்தோடு தான் அந்த மொழியை நான் கொண்டாடுகிறவளா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, தமிழ்ல மட்டும்தான், தமிழ் மொழியில மட்டும்தான் நிலத்தையும் பொழுதையும் ஒன்றாக இணைத்து அந்த நிலத்தையும் பொழுதையும் முதல் பொருளாக குறிப்பிட்டு சங்க இலக்கியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ப நிலமும் பொழுதும் அப்படின்னா டைம் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு சயின்ஸ்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கு. ஆனா இதை வந்து சங்க இலக்கியத்துல தொல்காப்பியத்துல நிலமும் பொழுதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதற் பொருளா வச்சிருக்கிறாங்க. இதற்கு அடுத்த நிலையில வந்து அந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த நிலமோ அந்த நிலத்தை வந்து 5 நிலமாக பிரித்து 5 நில குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் சொல்லி அந்த நில அமைப்புக்கு உட்பட 5 நிலமாக பிரித்து இந்த 5 நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய நதிநிலைகள், அங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் அங்கு அவர்கள் வாழக்கூடிய மக்களுடைய தன்மை, அங்கு வாழக்கூடியவர்களுடைய கலை, கலாச்சாரம் சார்ந்து
கருப்பொருளை உருவாக்குறாங்க. இதெல்லாம் எதற்காக அப்படின்னா, அந்த நிலத்தையும் பொழுதையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கருப்பொருள்கள் வழியாக மனித மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஒரு மரத்தை சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அந்த மரத்தை சொல்வதற்கு ஒரு பொருள் இருக்குது. ஒரு நீர்நிலையை இது குளம் என்று சொன்னாலோ, இல்ல ஆறுன்னு சொன்னாலோ, கடல்னு சொன்னாலோ கூட அதற்கு கூட ஒரு தனித்த உள் அர்த்தமாக, ஒரு படிமமாக, குறியீடாக 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட மொழியில மிக முக்கியமான உள்ளடக்கங்களை கொண்டதாக இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை இவ்வளோ வருடங்கள் கழித்து நாம பேசலாமா, பேசுறதுக்கு விஷயம் இருக்கா, இன்றைய தலைமுறைக்கு, இந்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு, இனி வர்ற காலத்துல இருக்கவங்களுக்கு சங்க இலக்கியம் பழமையானதா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாம் கூட கேட்கலாம். அப்ப இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டா கூட பழமைங்கிறது வேற, நம்ம மரபுங்கிறது வேற விஷயம். இங்க பழமை கிடையாது, மரபை நாம தொட்டு பேசக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை தமிழ் மொழியில நம்ம கண்டடைஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். இப்ப அகம் புறம் அப்படிங்கிற 2 விஷயங்களை பிரித்து எழுதப்பட்டதும் கூட தமிழ்ல தான் அமைஞ்சிருக்கு. அகத்தையும் புறத்தையும் 2ஆக பிரித்து மனித வாழ்க்கையில மனித மன உணர்வுகளை அகத்தையும் புறத்தையும் பிரித்து அதுல இருந்து சொல்லக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள், பல்வேறு மன உணர்வுகளை, காதல், காமம், பிரிவு போன்ற மன அக உணர்வுகளை சொல்லக்கூடிய பாடல்களை அங்கு உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. ஆனா இதே சந்தர்ப்பத்துல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த மனித மன உணர்வுகளை சங்க காலத்தில் சொல்லப்பட்டதில் நேர்மறையான உணர்வுகள் பேசப்பட்டிருக்கும். ஆனா அந்த நேர்மறையான உணர்வுகள்ல இருந்து இந்த 2000 ஆண்டுகள் கழித்து நாம் விலகி இருக்கிறோமா, அல்லது அதிலே தொட்டு இருக்கிறோமா? அன்பை சொல்லியிருந்தா, காதலை சொல்லியிருந்தா, பிரிவை சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா 2000 ஆண்டுகள் கழித்து அந்த பிரிவில் நிகழ்கிற அல்லது காதலில் நிகழ்கிற, அன்பில் நிகழ்கிற துரோகத்தையும் வன்மத்தையும் பேசக்கூடிய ஒரு தொடர் இழைகளான கவிதைகளை இன்னைக்கு நாம பாக்குறோம். இப்போ இந்த தலைமுறை கேட்பாங்க, நான் ஏன் சங்க இலக்கியம் படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்கன்னா, அவங்களுடைய உளவியல் ரீதியான பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு அங்கிருந்து விடை காண்பதற்காக சங்க இலக்கியத்தை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு பண்பாட்டின் மொழியாக, கலாச்சாரத்தின் மொழியாக, நாளைக்கு இந்த மொழி எனக்கு என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பல்வேறு விஷயங்களை அது அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மொழியாக தமிழ் இருக்கு. இத்தனை 2000 ஆண்டுகள், இன்னும் 2000 ஆண்டுகள் எவ்வளவு இருந்தாலும் கூட இந்த மொழிக்கு அழிவு இல்லாத, அதனுடைய செழுமை குறைந்து போகாத அளவுக்கு அத்தனை பலங்களை கொண்டதாக சங்க இலக்கியம் தமிழின் கைவசமாக இருக்கு. முத்துலிங்கத்தினுடைய ஒரு கதை. முத்துலிங்கம் இலங்கையை சேர்ந்த ஒரு புலம்பெயர்ந்த ஒரு தமிழர், கனடாவில் இருக்கிறார். அவருடைய ஒரு சிறிய ஒரு கதையில் அவர் சொல்லுகிறார், இந்த அவர் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்காக, அவர் தொழில் நிமித்தமாக பல்வேறு நாடுகளில் அவர் குடிபெயர்ந்து பல்வேறு இனத்தைச் சேர்ந்த, பல்வேறு மொழியைச் சேர்ந்தவர்களோடு அவர் உரையாடி வந்தவராக இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அவர் ஒரு கதை, அந்த கதையில் தலைப்பு சுவர்களுடன் பேசும் மனிதன் என்பது அந்த கதையோட தலைப்பு. அந்த கதையில அவரே கதையிலுடைய நாயகனாக வர்றாரு. அவர் பேசுகிறாரு. அது யாரோடு பேசுகிறாருன்னா, ஒரு முடி திருத்தக்கூடிய நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய முடி திருத்துபவரோடு அவர் பேசுபவராக இருக்கிறார். அந்த முடி திருத்துபவர் அவரோடு ரொம்ப பேசுறவரா ஒரு கடையில இருக்கிறாங்க. அதை விட்டு நகர்ந்து வேறு ஒரு இடத்திற்கு அவர் வர்றாரு. அந்த வேறு ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது ரொம்ப மிக அமைதியானவரா இருக்கிறார். ஒரு முறை அவரு பேசும்போது அந்த கடையில இருக்கக்கூடிய அவர் ஒரு மத்திய கிழக்கு நாடுகளை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார். அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளை சேர்ந்தவராக அந்த முடித்திருத்துவர் இருக்கும்போது அவர்கிட்ட அரேபிய மொழியை பேசி கொண்டு ஒரு பெண் வர்றாங்க முடித்திருத்துவதற்காக. இவர் பதில் சொல்ல தெரியல அப்படிங்கும்போது சண்டை போட்டுட்டு அவங்க வெளியே போயிடுறாங்க. ஒரு மிகச்சிறிய அந்த காட்சியிலிருந்து அந்த கதை நகர்ந்து போகுது. அப்போ அவர் கேட்கிறார், என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கும்போது, நீ எப்படி ஒரு ஈரான்ல இருந்து ஈராக்கிலிருந்து நீ வந்துட்டு ஒரு அராபிய மொழி தெரியாதவனாக நீ இருக்கிறியா அப்படின்னு அவங்க சண்டை போடுறாங்க. ஆனா அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்ப நீ எந்த மொழியை பேசுற அப்படின்னு கேட்கும்போது, தொழிலுக்காக பாரசீக மொழியை பேசுபவனாக நான் இருக்கிறேன், ஆனா என்னுடைய வீட்டு மொழிங்கிறது அராமிக் மொழி அப்படின்னு அவர் சொல்றாங்க. அந்த கதை முழுக்க மொழியை குறித்து, நாட்டை குறித்து, ஒரு நாட்டில் எந்த மொழிக்கு நாடு சொந்தமாக இருக்கிறதோ அந்த மொழி காலகாலமாக செழித்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாங்க. மால்டா அப்படிங்கிற அந்த தீவில் இருக்கக்கூடிய மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஒரு 4 லட்சம் மக்கள் பேசக்கூடிய மால்டீஸ் மொழிக்கு அழிவே கிடையாது அப்படின்னு கதையில பேசிட்டு வரும்போது அவர் ஒரு வரி சொல்லுவாரு, தமிழுக்கு தனித்த ஒரு நாடு இல்ல,
அது ஒரு மாநிலம் தான் இருக்கு, இவ்வளோ பேர் பேசுகிற ஒரு மொழிக்கு தனித்த நாடு இல்லையே அப்படின்னு வந்து ஒரு உரையாடல்ல போகும். இந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம மாறுபட வேண்டியிருக்கு. தனித்த ஒரு நாடு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கூட இந்த மொழி, நம்முடைய தமிழ் மொழியானது இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அது அழிஞ்சு போகாம இருப்பதற்கு மிக அடிப்படையான ஒரு உண்மையான ஒரு காரணம் ஒண்ணு இருக்குது. அது என்னன்னு சொன்னா, தமிழ்ல இந்த நூற்றாண்டில் எழுதிய கவிஞர் பாரதிதாசனுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடல், தமிழ் கவிதை. தமிழுக்கு அமுதென்று பேர், இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று அந்த வரிகள் தொடங்கக்கூடிய அந்த பாடல்ல, தமிழுக்கு நிலவென்று பேர், இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சமூகத்தில் நிகழக்கூடிய அத்தனை விளைவுகளுக்கும் நல்லனவோ அல்லது அல்லனவோ எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கு இந்த மொழிதான் காரணமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல வந்து அவர் சொல்லக்கூடிய அடுத்த மிக முக்கியமான ஒரு வரி இருக்கு, தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப தமிழுக்கு மனம் என்று, வாசனை என்று பேர் அப்படின்னு சொல்லும் போது தமிழுக்கு ஏன் வாசனைன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, தாய்மொழி அப்படிங்கிறதை, ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்றதை வாசனையாக அவங்க பாக்குறாங்க. அப்போ ஒரு மொழி எப்படி வாசனையா இருக்கும், ஒரு மொழி எப்படி இன்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, வாசனை அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா உணரக்கூடியது தாய்மொழிக்கு தான் அந்த வார்த்தையை நம்ம சொல்ல முடியும். தாய்மொழி வாசனை உடையது அப்படின்னு சொன்னா எதனுடைய வாசனை அப்படின்னா தாயினுடைய வாசனை உடையது. தாயினுடைய வாசனை அப்படின்னு சொல்றது வந்து தாய்ப்பாலின் வழியாக புகட்டக்கூடிய ஒரு மொழியாக தாய்மொழி மட்டும்தான் இருக்கும். இது தமிழ் மட்டும் கிடையாது, உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எந்த மொழி பேசுபவருக்கும் அவரவர் தாய்மொழி என்பது வாசனை மிக்கதாக, தாயினுடைய வாசத்தை கொண்டதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி. தாய்மொழியில் தான் கனவு காண முடியும், தாய்மொழியில் தான் காதலை சொல்ல முடியும், தாய்மொழியில் தான் காமத்தை வெளிப்படுத்த முடியும், தாய்மொழியில் மட்டும்தான் கோபத்தை சொல்ல முடியும். மற்ற எந்த மொழியில் சொல்லும் போதும் அதில் ஒரு படி குறைவாக இருக்கும். மன்னிப்பு கேட்பதென்றாலும் தாய்மொழியில் கேட்கும் போது அதற்கு ஒரு தனித்த ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது. நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு ஒரு தனித்த மதிப்பு இருக்கிறது. இவ்வாறாக இந்த தாய்மொழி அப்படிங்கிறது வந்து தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு புகட்டப்படக்கூடிய அன்பு, இந்த சமூகத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம், பண்பாடு, பாரம்பரியம், இப்படியான பல்வேறு விஷயங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த தாய்மொழி அமைந்திருக்கிறது. இந்த தாய்மொழியை குறித்து சங்க இலக்கியத்தில் பல்வேறு பாடல்கள் இருந்தா கூட கவிஞர் பொன்முடியாருடைய ஒரு பாடல் இருக்கிறது. அந்த பொன்முடியாரினுடைய ஒரு பாடல், ஈன்று புறந்தறுதல் என் தலை கடனே, சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே, வேல் வெடித்து கொடுத்தல் கொல்லருக்கு கடனே, நன்னடை நல்கள் வேந்தருக்கு கடனே, ஒளிர்வாள் அருந்தம முறுக்கி களிர் எறிந்து பெயர்தல் காலைக்கு கடனே என்று ஒவ்வொருத்தருக்குமான யாருக்கெல்லாம் எந்த விதமான செயல்பாடுகள் கடமையாக இருக்குமோ அந்த கடமையை அந்த பாடல் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறது. ஒரு இளைஞனாகப்பட்டவன் களிர் எறிந்து ஒரு வேலை எறிந்து ஒரு காளையை வீழ்த்தக்கூடியவனாக, களிரினை வீழ்த்தக்கூடியவனாக, ஒரு போர்க்களத்தில் போர் செய்பவனாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞனாக இருந்தால் அவன் வந்து ஒரு செயலில் வெற்றி பெறக்கூடியவனாக அவன் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்தான் இருக்க முடியும். நன்னடை நல்கள் வேந்தருக்கு கடமையாக இருக்க முடியும். ஒரு நல்ல ஆட்சியை கொடுப்பது, அல்லது வெற்றி பெற்று வருபவர்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து கொடுப்பது என்பது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் மன்னனுக்கு கடமையாக இருக்கிறது. ஒரு கொல்லனுக்கு நல்ல அவன் வேல் வெடித்து கொடுப்பது அவனுடைய கடமையாக இருக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமையாக இருக்குது. தந்தைக்கு சான்றோனாக்குதல் கடமை. ஒரு தகப்பனாக இருப்பவர் அந்த குழந்தையை அறிஞர் சபையில் நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய சான்றோனாக ஆக்க வேண்டும். இப்படி எல்லோருக்குமே அது கடமையாக மட்டுமே இருக்க, தாய்க்கு மட்டும் ஈன்று புறந்தறுதல் என் தலைக்கடனே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப தலையாய கடனாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா. ஒரு குழந்தையை பெற்று கொடுப்பது தாயினுடைய தலையாய கடன் அப்படின்னு மட்டும் அந்த பால் சொல்லல, ஈன்று புறந்தறுதல் என் தலைக்கடனேன்னு சொல்றாங்க. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த மொழி பேசக்கூடிய ஆணோ பெண்ணோ எந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களிடம் போய் உனக்கு யார் ஆசிரியர் அப்படின்னு கேட்டாக்க அவங்களுடைய தாய் தான் சொல்லுவாங்க. அம்மா கிட்ட இருந்துதான் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படையான கல்வியை அவங்க கற்றுட்டு வருவாங்க. அன்பையும் காதலையும் அவர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு மன உணர்வுகளையும் தாயிடமிருந்தே பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். தாயிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அன்புதான் கலாச்சார ரீதியாக, பண்பாடு ரீதியாக, தொன்மங்களின் வழியாக, கதைகளின் வழியாக மெல்ல மெல்ல இந்த சமூகம் முழுக்க விரிவடைந்து அது கிளைப்பரப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதனாலதான் தாய்
அவ சொல்றா, என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஈன்று புறந்தருதல் அப்படின்னா புற வாழ்க்கைக்கு தருவது, புற வாழ்க்கைக்கு ஒரு குழந்தையை பெற்று தருவது. ஈன்று தருதல் என் தலைக்கடன் மட்டும் தாய்க்கு சொல்லல, புற வாழ்க்கைக்கு தருவது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கல்லூரியில போய் படிக்கக்கூடிய கல்வியானது தொழிலுக்கான கல்வி. முத்துலிங்கத்தின் கதையில் வரக்கூடிய ஒரு நாயகன் சொல்வது போல, என்னுடைய தொழிலுக்காக நான் ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனா என்னுடைய தாய்மொழி, என் வீட்டில் நான் பேசக்கூடிய மொழி என்பது வேறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முடித்திருத்தக்கூடியவன் அந்த கதையில் செய்யக்கூடிய செயல் தன்னுடைய தாய்மொழி பேசுவதற்கு உடன் யாருமே இல்லாத காரணத்தினால் சுவரை பார்த்து தன் மொழியை பேசிக் கொண்டிருப்பதாக அந்த கதையில் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பார். அப்படி கூட தன்னுடைய தாய்மொழியை காப்பாற்றி விட வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியமானது. தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக தாய்மொழியாக தமிழை கொண்டாடி கொள்வதற்கு இங்கு அரிய பல்வேறு பொக்கிஷமாக நம்மிடம் நிறைய கொட்டி கிடக்கிறது. பண்பாடு ரீதியாக, கலாச்சாரம் ரீதியாக நாம் கற்றறிந்து கொள்வதை, மரபு வழியாக கற்றறிந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தனையும் உணர்வு ரீதியாக நம்மிடம் இருக்கிறது. உணர்வு ரீதியாக இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே கல்வி நிலையங்களில் நாம் அறிவு ரீதியாக கற்றுக்கொள்கிறோம். தாய்மொழி, தாயிடமிருந்து புகட்டக்கூடிய இந்த தொன்மங்கள் வழியாக நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் அத்தனையும் இந்த மொழியானது தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு மடைமாற்றம் செய்து நம்முடைய கைக்கு வந்து சேரக்கூடிய இந்த இடத்தில்தான் இந்த நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய உலகம் தொடங்கிய காலத்தில் அல்லது இந்த மொழி தொடங்கிய காலத்தில் தமிழ் மொழியானது உருவாகிய காலத்தில் எந்த மாதிரியான அடிப்படையான மனித மன உணர்வுகள் இருந்திருக்குமோ, அன்பும் காதலும் பிரிவும் எப்படி வந்து வெளிப்பாட்டு முறை இருந்திருக்குமோ, அதனை இன்றைக்கு காலமாக ஒரு தலைமுறைக்கு கடத்தி கொண்டு வருவதில் இந்த மொழி உணர்வு ரீதியாக கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியதாக தாய்மொழி தான் இருக்கிறது. ஆனால் அறிவு ரீதியாக அதன் மீது கேள்விகளை வைப்பதும் அதை எடுத்து இன்னொருவரிடம் சொல்வதற்கு பயன்படுத்துவதற்கும் கல்லூரிகளிலும் அலுவலகங்களிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய மொழியாக, அறிவு ரீதியான மொழியாக அயல் மொழிகள் இருக்கிறது. தாய்மொழி என்பது நம்மிடம் கண் பார்வையில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒளி போன்றது. இயற்கையிலே வந்து கண் பார்வையில வந்து அந்த ஒளி இருக்கும்போதுதான் நம்முடைய மற்ற அயல் மொழிகளை எல்லாம் கற்றுக்கொள்ளும் போது அது உயிர்ப்போடு இந்த சமூகத்தோடு உறவாடுவதற்கு துணை செய்யும். அந்த வகையில வந்து ஒரு தாலாட்டு தொடங்கி ஒப்பாரி வரைக்கும் தாய்மொழியில் சொல்லக்கூடிய பாடல்களுக்கும் வரிகளுக்கும் பல்வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. அந்த அர்த்த ரீதியாக உணர்வு பாடாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை தான் என்னுடைய கவிதைகள் வழியாகவும், என்னுடைய கட்டுரைகள் வழியாகவும், அல்லது என்னுடைய உரைகளின் வழியாகவும் அடுத்த தலைமுறைக்கு இளைஞர்களிடம் கடத்தக்கூடிய அல்லது மடைமாற்றம் செய்யக்கூடிய ஒரு தாயின் செயலாக, ஒரு முளைப்பால் கசிந்து தாய் தன்னுடைய இரத்தத்தில் இருந்து எப்படி பாலாக மாற்றி தன்னுடைய உணவாக அந்த குழந்தைக்கு புகட்டுகிறாளோ, அப்படித்தான் ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களும், தாய்மொழியில் எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களும் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொல்லையும், அது உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எந்த எழுத்தாளர்களும் தாய்மொழியில் எழுதும் போது தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொல்லையும், தங்களுடைய ஒவ்வொரு அந்த கதையோ அல்லது கவிதையோ எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம், அதில் வந்து தங்களுடைய இரத்தத்தை பாலாக மாற்றி அடுத்த தலைமுறைக்கு அவர்கள் கடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த செயல்பாட்டில் நானும் இணைந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு உள்ளபடியே பெருமையான ஒரு விஷயம்தான். இதை மதித்து இன்றைக்கு வந்து என்னை பேசுவதற்காக, உங்களோடு உரையாடுவதற்காக அழைத்த மேடம் உமா பாப்புசாமி அவர்களுக்கும், பிரேம்குமார் அவர்களுக்கும் மற்றும் சரவணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷம் சக்தி ஜோதி அவர்கள். மியூட் ஆயிட்டீங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க பேசினதுல அருமையான கருத்துக்கள் இருந்துச்சு. For the benefit of the audience, I have put some of the points what she mentioned in her talk, though she cited a lot of examples from various poetry, right from Sangam literature to modern writers like Multilingualism and her own poetry also. So those of you who are interested can scroll through the chat box. The main idea what she's saying is like it is the writer who feeds the community people, like in her example, it's a right, like how a mother feeds the baby milk for the nutritional development of the child. Likewise, writers have the responsibility and they are feeding the people. They are writing it almost like they're converting their blood into milk and feeding
the writers. That was her last statement, what she said. So she says, whatever you can, it's well expressed only through mother tongue, whether it is a lullaby or whether it is a funeral song, or even when you have to have science and technology in education, in any quality education, that can be well expressed only in mother tongue, and also because that's the only language which can be connected through emotions. So this is the basic idea of what she was talking. Now, I would like to invite questions, feedback. You feel free to ask in any language we have from our group, people who can interpret, and I will be translating it into Tamil for her. Questions and feedback, please. She began one more important thing by talking about how Tamil people, ancient Tamil people, have categorized Tamil land into 5 types, like from Sangam literature, and also how it is connected with the different time, in the sense seasons. Like we have winter, autumn, all types of seasons, and how the land is connected and what was going on through. Because she specialized in writing poetry about women and nature, I think that was the reason she started talking about it. And the main point, takeaway point is, it's only through one's own mother tongue we can express our emotions, and writers have a larger responsibility to shape their community, because that's what was happening right from the Sangam period. Any feedback, questions? Madam, can you hear me? Yes, please go on. मैं हिंदी में ही बोल सकता हूँ, बोलना चाहता हूँ. No problem. Tariq, you're there, right? Hello, madam. Yeah, please, sir. Yes, please go ahead. Zakir sir, please go ahead. तमिल का जो लिटरेचर है, उसको संगम लिटरेचर क्यों बोल रहा है? Why the Tamil literature is called Sangam literature? Madam, can you hear me? Yes. This is my question. Yeah. Madam. What is the question again? Why? Why Tamil literature is called as Sangam literature? Why? What is the meaning of Sangam literature? Classical Tamil. Sangam, like we say, Sangam Valartha Tamil. Earlier days, like Tamil was patronized by different kings, and was now, I think, Shakthi Jyothi, நீங்க சொல்றீங்களா தமிழ் இலக்கியங்கள்ல ஏன் சங்க இலக்கியம்னு சொல்றோம்? ஏன் சொல்றோம்? இந்த மொழியில வந்து ஆந்த்ரோபாலஜி நம்ம கொஞ்சம் கவனிச்சோம்னாக்க ஒரு இனக்குழு உருவாக்கம் இருக்கும். அந்த இனக்குழு உருவாக்கத்துல எப்ப வந்து மேட்ரியார்கல் சொசைட்டி பேட்ரியார்கலா கன்வெர்ட் ஆச்சோ, அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆன ஒரு காலகட்டம். அப்ப சின்ன சின்ன குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தாங்க. அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கும்போது அந்த காலகட்டத்துல ஒரு அந்த தொழில் சார்ந்தோ அல்லது ஒரு குழுக்கள் சார்ந்தோ அந்த நிலம் சார்ந்த ஒரு அமைப்புகள் இருப்பாங்க. சின்ன சின்ன அமைப்புகளாக, ஒரு குழுக்களாக, சிறு குழுக்களாக இருந்தவர்கள் உருவாக்கின ஒரு காலகட்டம். பெருநில மன்னர்கள், பலது பெரிய மன்னர்கள் உருவாகாதற்கு முன்பு ஒரு குறிப்பிட்ட கிளஸ்டர் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த காலகட்டத்துல வந்து அந்த சங்க இலக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் உருவானது. கிட்டத்தட்ட 600 years 600 ஆண்டுகளாக உருவான இலக்கியம். ஒரு கிட்டத்தட்ட 3000 ரைட்டர்ஸ் அதுல இருந்திருக்கிறாங்க. இப்போ 3000 புலவர்கள் வரைக்கும், சாரி 474 புலவர்கள், ஒரு 3000 பாடல்கள் வரைக்கும் இதுல வந்து இன்னைக்கு கலெக்டிவா கிடைச்சிருக்கு. ஆனா இதுல இன்னும் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியாத பாடல்களும் ஓலைச்சுவடிகளும் எழுதப்படாத அல்லது தொகுக்கப்படாத பாடல்களும் இருக்கு. நமக்கு இது வரைக்கும் தொகுக்கப்பட்டது மட்டுமே 3000 பாடல்கள் வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு. அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த ஒரு காலகட்டத்தை தான் நம்ம சங்கம் பீரியட்னு சொல்றோம். அதற்கு பின்பு வரக்கூடியது பக்தி இலக்கிய காலம். ஒரே ஒரு நிமிஷம், இதை நான் மொழிபெயர்த்தறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க, ஏன்னா எனக்கும் கஷ்டமாயிடும். So what she is saying is, she is giving an explanation from anthropological point of view. Even before monarchy started, when people had matriarchal or patriarchal societies, in that people had started like the clan system, you can think in one sense. You had a cluster of people, groups of people, like a clan system there, and based on occupations and based on the seasons and the land,
people were divided themselves into different groups, and they were living, and that time was according to her that period. தப்பா சொன்னா திருத்துங்க. So that period is the Sangam period from where literature started coming, and then slowly small kingdoms and other things started, and people patronized the development of Tamil literature, and there were a lot of poetry written. Of course, we have lost so much. Whatever is available, we have now. There are three types of like you can divide even Sangam, that classical literature, also into three eras. What she didn't add, I'm adding to what she said. So what she was saying is the Sangam period is one thing, where you have Ettu Thogai and Pattu Pattu. These are like we call it as Sangha Kalam. Like Ettu Thogai is a collection of 8 beautiful volumes of poem and 10 idlis, we say. That is the Pattu Pattu. These are like, that is the Sangha Kala literature, we say. And after that, there is one period which is after Sangha Kalam, Sangam Maruviya Kalam. So after Sangam period, that is, you can say that it was chronologically also historically divided also, or a certain period. And there were, of course, the language underwent a lot of changes when it was in Sangam period, and then Sangam Maruviya Kalam. She started with Bhakti period. Now I give back to her. Yes. Thank you. Quite clear. Yeah, Bhakti period நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. Afterwards, இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா சொல்லணும்னா, சங்கம் பீரியட் எழுதப்பட்டதாக அது சங்க இலக்கியம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேர்ட் காயினேஜ் கூட, சங்கம் அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் கூட சங்க கால பாடல்கள்ல இல்ல. அது ரொம்ப பின்னாடிதான் நாம வந்து தொகுக்கும் போது உருவாக்கின ஒரு வேர்ட் அது. அது வந்து ஸ்கேட்டர்டா அங்கங்க எழுதப்பட்ட பாடல்கள். That's a beautiful explanation she has given. In the Sangam poetry, the so-called Sangam poetry, the word Sangam does not appear. It is we afterwards who have coined this term to refer to those early collections of the poetry of the then period. So like you can have like old Tamil, those days it was even called old Tamil. Sendamil, so they Sendamil and Kodun Tamil. Yeah, please. சொல்லுங்க. ஒரு கிட்டத்தட்ட அது வந்து பக்தி இலக்கிய காலத்துக்கு பின்பு தொகுத்து கொண்டு வரும்போது, தொகுத்தவர்களுடைய வாசிப்பு வசதிக்காக நம்ம எப்படி வந்து வாசிக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வந்து 8 தொகை 10 பாட்டெல்லாம் சங்க இலக்கியம், அதற்கு பின்பு வந்து நீதி நூல்கள் எல்லாம் நாலடியார் அல்லது வந்து திருக்குறள், இதெல்லாம் வந்து சங்கம் மருவிய காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. அல்லது காப்பிய இலக்கியங்கள், பக்தி இலக்கியங்கள் என்பதெல்லாம் வாசிப்பவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான வகைப்பாடுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சங்க இலக்கியம் அப்படிங்கிறது எழுதப்பட்ட அந்த காலகட்டத்திலே தொல்காப்பியம் உருவாகி இருக்கும், அல்லது தொல்காப்பியம் எழுதும் போதே தொல்காப்பியத்தினுடைய ஒரு டெஃபினிஷனை கையில வச்சுட்டு சங்க இலக்கியம் எழுதியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இந்த இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த காலமா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு புரிதல் இருக்குது. இன்னும் கூட சங்க இலக்கியத்துக்குள் இன்னும் நம்ம ஆய்வு செய்வதற்கு நிறைய விஷயங்களை கொண்டதாக தான் சங்க இலக்கியம் எப்பவுமே இருக்கு. Yeah, a very beautiful explanation. She says like after the Bhakti period, and after the Bhakti literature came into existence, only after that Tamil scholars felt the need to categorize poetry into these three divisions: Sangha Kalam, Sangam Maruviya Kalam, and Bhakti Kalam. And afterwards, what we have, then you have, of course, modern Tamil. Shakthi Jyothi is speaking with you now. She's speaking in modern Tamil, but she's using the literary form of modern Tamil. Like it is the high variety of Tamil. You know, Tamil is diglossic. If she and I have to meet outside this platform, we would use colloquial variety to speak. So Tamil is rich in the number of ways one can express language. I hope that answered your question. So any other questions or feedback? Because we have one more writer. We need to listen to Kachi also. So any other questions, feedback? Okay, thank you so much. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் திருமதி சக்தி ஜோதி. ரொம்ப இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களை நேரடியாக உங்களுடைய பேச்சு கேட்குற வாய்ப்பு கிடைச்சது. We are very grateful that you accepted our invitation, and this is the first time even me, I could listen to you. Though I have listened to your YouTube recordings, this is the first time I am
seeing you face to face, even if it is virtual mode. Thank you, ma'am. Yeah. ரொம்ப சந்தோஷம். வணக்கம். வாழ்க தமிழ். Thank you for the translation or everything. Thank you, ma'am. Yeah, thank you so much. Now we would like to invite the next speaker in the series, because I think he is very much with us. Hello. Yeah. So Shri. Yeah, Namaskar ji. So yeah, Shri Vishram Gadhavi. He is the writer in Kachi. So we do have, CIL has associations with Kachi people, I think for many decades. So we are very happy that you are participating. So you can speak in Hindi or Kachi or mixed mode, and I request Sujay Sarkar and Tariq Khan to help me in moderation of this presentation. Thank you so much. Yeah. Okay. धन्यवाद रूपा जी। मैं अपनी बात हिंदी में रखना चाहूँगा। सभी जुड़े हुए मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं 3-4 फरवरी 2019 कोरोना काल के ठीक पहले जो कच्छ यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ एक आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी ओर से एक सेमिनार अटेंड किया गया हुआ था। उसमें मैं शरीक हुआ था, शामिल हुआ था। सुजाता भुजंग जी वहाँ पे आई हुई थी। मैं सुजाता भुजंग जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो आपकी हमारी जो इंस्टीट्यूशन है तो भाषा के लिए जो काम कर रही है, खास करके क्षेत्रीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं है जो अभी लुप्त होने जा रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपनी बात कच्छी भाषा के बारे में रखने जा रहा हूँ, क्योंकि कच्छ प्रदेश एक अनूठा प्रदेश है। वो सांस्कृतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और भाषाकीय तौर पर भी कच्छी अपना एक अलग मायना रखती है। क्योंकि गुजरात से कच्छ वैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन गुजरात का अभी तो एक जिला है, लेकिन उसके जिले के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। वो एक सेपरेट प्रदेश है। उनकी अपनी एक तासीर है, एक अपनी पहचान है, सांस्कृतिक एक उसकी विरासत है, उसकी धार्मिक आध्यात्मिक भी अपनी विरासत है। तो एक प्रदेश के तौर पर हमें देखना चाहिए कि जो कच्छ है वो और उसकी कच्छी भाषा है वो एक कच्छ को, शेष भारत को एक पहचान देती है। तो मैं सबसे पहले आप सबको यहाँ का जो एक फोक लिटरेचर है उनका एक बहुत सुपरहिट एक सॉन्ग है, और केवल सॉन्ग नहीं है लेकिन वो एक कच्छ प्रदेश का राष्ट्रीय गीत है और यहाँ का बहुत ही पॉपुलर गीत है। तो वो आपको मैं सुनाना, शेयर करना चाहूंगा। My screen is visible. Yes, yes. We are waiting, sir. Vishram sir,
आवाज नहीं आ रही है, आप जरा चेक करेंगे? हाँ, आवाज नहीं आ रही? There is no sound. There is no sound. बंद है ना? Play the audio. बंद है? ऑडियो तो वॉल्यूम चालू कर सकते, ऑडियो चालू कर दो। सॉरी, हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, हम लास्ट में ये प्ले करेंगे। थोड़ी टेक्निकल दिक्कत की वजह से हम आप तक आवाज नहीं सुना पा रहे हैं। हाँ, तो मैं कच्छी भाषा की, ये हमारा महात्मा निरंजन ने बनाया हुआ एक अच्छी राष्ट्रीय गीत इसे बोलते हैं। और मुझी मातृभूमि के नमन आए भलो असांजो वतन, ये गीत था, बहुत पॉपुलर गीत है यहाँ का। तो मैं कच्छ की बात कर रहा था कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अमिताभ बच्चन का ये स्लोगन काफी आपने टीवी पे सुना होगा, एड में देखा होगा। अभी व्हाइट डेजर्ट की वजह से कच्छ बहुत ही देश दुनिया में एक लाइमलाइट में है। लेकिन कभी एक समय था कि कच्छ एक गुजरात के कोने में पड़ा हुआ इलाका, और इसकी जो राजकीय, जो पॉलिटिकल जो इसका हिस्ट्री है वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो सीधी भाषा से संबंध रखती है, भाषा से इसका सीधा ताल्लुकात है। तो धोलावीरा जो हड़प्पियन संस्कृति है हमारी, सिंध में से जुड़ी हुई, जो सिंध, कच्छ और पूरे सौराष्ट्र, गुजरात से और पूरे देश में, तो हड़प्पियन संस्कृति का सबसे बड़ा और वेल प्लान्ड, वेल कल्चर्ड नगर जो धोलावीरा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी तो गवर्नमेंट ने घोषित किया है। तो वो भी कच्छ के खरीर प्रांत में है, खरीर इलाके में है। तो धोलावीरा में जो एक साइन बोर्ड मिला है, क्योंकि कहीं भी जो जितनी भी साइट है हड़प्पन नगरों की, तो कहीं पे भी साइन बोर्ड नहीं मिला है। ये धोलावीरा ऐसी साइट है, वहां पे एक साइन बोर्ड मिला है, लेकिन अभी तक वो रहस्य सुलझा हुआ नहीं है कि ये साइन बोर्ड में कौन सी भाषा है, कच्ची भाषा से उसका कोई ताल्लुकात है या नहीं। क्योंकि ये 5000 पुरानी लिपि वहां से मिली है। तो कभी आप कच्छ आना हुए हो तो आप जरूर देख सकते हैं। चलो, मैं आप बात करते हैं कच्छी भाषा की ओर जाएंगे। इससे पहले कच्छ की जो राजकीय पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसकी थोड़ी बात इसलिए करना जरूरी है कि कच्छी भाषा को राज्याश्रय नहीं मिला, सिर्फ लोकाश्रय यानी कि पब्लिक के सहारे वो कच्छी भाषा पलती रही, अपनी कंठे परंपरा की भाषा बनी रही। वो लिखित परंपरा में बहुत नहीं आई, इसकी वजह से कच्छी भाषा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा दूर न जाए तो जो मध्यकाल है, मध्यकाल में 1539 यानी कि 1539 में कच्छ में महाराज श्री खेंगार जी ने भुज नगर की स्थापना की। तो भुज नगर की स्थापना की, साथ साथ जाडेजा राजवंश की भी स्थापना की। जाडेजा राजवंश की स्थापना की, और ये एक पड़ाव मायना इसलिए रखता है कि कच्छ जो था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा था, छोटे छोटे सूबेदार थे वहां। लेकिन जाडेजा महाराज श्री खेंगार जी ने कच्छ को पूरा, एक कच्छ को एक करके एक छत्र के नीचे रखा। इससे क्या हुआ कि सब जो कच्छी लोग हैं वो एक शासन के तले जुड़ गए। लेकिन कच्छी भाषा के बारे में हम कहें तो क्या बात हुई, नुकसान क्या कहाँ हुआ कि वहां के जो वो आया करते थे दीवान, तो जो वहीवटदार होते थे, वो काफी यहाँ के जो नागर कम्युनिटी है इससे जुड़े हुए गुजराती मातृभाषा जिसकी थी, तो वो वहीवट करने आए थे। तो उसको जब जो सरकारी गैजेट थी, सरकारी जो कुछ लिखावट थी, फरमान था, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो भाषा है वो गुजराती बनी, कच्ची न बन पाई। और 1850 के करीब विधिवत तौर पे यहाँ की दरबारी स्कूल की प्रारंभ हुई, प्राइमरी शाला में।
तो वहां भी गुजराती के साथ साथ कच्छी के एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो ये एक कमजोरी रही कच्छी भाषा की। अगर ये बातें होती तो आज कच्छी भाषा का हिस्ट्री, इतिहास, वर्तमान और भविष्य कुछ और होता। ठीक है। और एक बात यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और शेयर करना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष के जो साहित्य है, ब्रजभाषा साहित्य, उस साहित्य जगत में एक बाबत कच्छ में जो घटना बनी, वो उस घटना ने पूरे भारत के ब्रजभाषा साहित्यकारों का ध्यान खींचा है। वो घटना थी तो महाराज श्री लखपत जी ने 1749 यानी कि 1749 में यहाँ ब्रजभाषा पाठशाला शासन के खर्च से, शासकीय तौर पर यहाँ ब्रजभाषा पाठशाला स्थापित की थी। उसमें बड़े बड़े विद्वान आचार्य, जैनाचार्य भी, चारण आचार्य भी पढ़ाते थे। और यहाँ कोई कोर्स का समय मर्यादा नहीं था, कोई 3 साल से 10 साल तक पढ़ सकता था। और जब वो यहाँ से पढ़ के निकले तब उनको बावनी, एक जो भी कविता में जो 52 पद की कविता है 52, तो 52 पद की कविता को बावनी बोलते थे। जो बावनी बना ले उसे यहाँ सर्टिफिकेट मिलता था। और ब्रजभाषा पाठशाला में जो सर्टिफिकेट लेके आए उसे बाकी की रियासतें कच्छ बाहर की राजकवि के पद पर नियुक्ति करती थी। तो वो एक बड़ी बात थी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ब्रजभाषा पाठशाला में भी कच्छी भाषा का अभ्यास हो या कच्छी कविता, कच्छी गद्य पद्य साहित्य, क्योंकि तभी तो पद्य गद्य साहित्य का बहुत विकास नहीं हुआ था, पद्य साहित्य ही था। क्योंकि मध्यकालीन जो भक्ति कविता थी तो कच्छ में भी मध्यकालीन भक्ति कविता ही रही। हमें जो मध्यकालीन साहित्य मिलता है 19वीं सदी तक, वो सिर्फ हमें कविता साहित्य ही मिलता है। तो वहाँ ब्रजभाषा पाठशाला में भी कच्छी कवियों के लिए या कच्छी साहित्य के लिए कुछ किया गया हो, ऐसा कोई सुराग हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, खैर, लेकिन अगर हम कच्छी भाषा की जो हिस्ट्री की बात करें तो कच्छ के कबीर कहे जाने वाले महात्मा मेकण जो जिनाम जो संप्रदाय है उससे ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन महात्मा मेकण एक अनटू द लास्ट, जो लास्ट तक जुड़े हुए ऐसे एक संत थे जिनको समृद्ध लोगों, जो उन्नत वर्ग है, प्रॉस्पेरस वर्ग है, वो भी पसंद करता था। और जो निचला स्तर है, सामान्य लोग हैं, वो भी पसंद करते थे। तो ये एक महात्मा मेकड़ का साहित्य ने कच्छी भाषा को एक पहचान दी, कच्छी साहित्य को पहचान दी। मुंह भायो तड़ हेकड़ो आई तड़ लख हजार, झुको ज्या लंघ्यो थया होता तरी पार है। तो ये बातें जो उन्होंने कही, तो सर्वधर्म संभाव की बात कही। और उन्होंने सरल कच्छी भाषा में जो शास्त्र की, वेद की जो बातें हैं, ज्ञान की और सत्य निष्ठा की बातें हैं, वो बातें कच्छी जनता में ऐसे कच्छी बानी में रूढ़ किया कि जिससे कच्छी साहित्य को बढ़ावा मिला। और हम जो देखते हैं कि आगे हम जाते हैं तो बहुत सारा अंतराल ऐसा मिलता है कि जहां कच्छी भाषा के विकास के लिए कोई विशेष प्रयास किया गया हो, ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन 19वीं सदी में जब हम आते हैं तब हमको कच्छी भाषा में बहुत सारे कवि मिलते हैं। और अभी दुलेराय कारणी हुए 1896 1896 वो में जन्म हुआ 26 फरवरी को। तो हम भी कच्छी लोग 26 फरवरी को विश्व कच्छी दिन मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो कच्छी भाषा के प्रति प्रेम जगाने का सबसे बड़ा कार्य किसी ने किया हो तो दुलेराय कारणी ने किया। तो ये चीज, हम दुलेराय कारणी तक आते हैं तो अर्वाचीन साहित्य में आप पहुंच जाते हैं। अब मैं थोड़ी कच्छी भाषा की जो बात करूंगा तो कच्छी भाषा में बहुत ही वैविध्य पाया जाता है। कोई अगर कहेगा कि ये बोली है तो ये बात गलत है, क्योंकि ग्रियर्सन ने अपने जो लिंग्विस्टिक सर्वे है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 9वें वॉल्यूम में उन्होंने सिंधी भाषा की उपबोली के तौर पर उल्लेख किया है। लेकिन मुझे लगता है कि कच्छी भाषा की जो बारीकियां हैं, खूबी है, भाषा के तौर पर उसकी जो एक ताकत है, वो उन तक नहीं पहुंच पाई। और सिंधी किसे मिलती जुलती होने की वजह से उन्होंने शायद उनको उपबोली कहा है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि सिंधी भाषा जो
सिंध में, दक्षिण सिंध में, उत्तर सिंध में बोली जाती है, तो सिंधी के सेम्युलर, सिंधी के समांतर ही कच्छी भाषा है। हाँ, ये सच है कि हम गुजरात से जुड़े हुए हैं, हमारा शासकीय जोड़ान जो है वो गुजरात से हुआ है, लेकिन कच्छ प्रदेश जो अखंड भारत में सिंध से बहुत ताल्लुक रखता था। सिंध से व्यापार भी जुड़ा हुआ था, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी, बेटी व्यवहार भी होता था। इसकी वजह से जो सिंधी और कच्छी संस्कृति का सांस्कृतिक जो एक दूसरों को जो मिलन है और सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो बहुत हुआ। और बहुत सारे वर्ड, अगर जो कच्छी भाषा के आप मूल में जाएंगे तो आपको सिंधी भाषा को जानना पड़ेगा, और सिंधी भाषा को अगर जानना है तो आपको कच्छी भाषा जाननी पड़ेगी। हाँ, अभी ये बात ये है कि हम गुजरात से जुड़े हुए हैं, गुजरात हमारा स्टेट है, हम गुजरात का एक हिस्सा है, तो गुजराती हमारी राजभाषा है और गुजराती हमारी वहीवट की भाषा होने के कारण यहाँ का जो लिखित व्यवहार लोग करते हैं, देखो यहाँ दो भाषाएं सिमिलर चलती है। यहाँ जो आम आदमी है वो अपनी बात कच्छी में करता है, घर में कच्छी में करता है, व्यवहार में कच्छी में करता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तब वो गुजराती में लिखता है। तो लिखित परंपरा न होने के कारण थोड़ा गद्य साहित्य का विकास कम हुआ, देरी से हुआ, लेकिन अभी हो रहा है। अभी पिछले 25-30 सालों में कच्छी गद्य का भी कथा साहित्य है, निबंध साहित्य है, चरित्र, निबंध चरित्र और भी जो उपन्यास साहित्य है और संशोधन, विवेचन, ये सब कच्छी में अभी हो रहा है। बाकायदा गुजरात सरकार ने कच्छी भाषा को कच्छी साहित्य एकेडमी भी दी हुई है, उसका सेमिनार भी होते हैं, पुस्तक प्रकाशन भी होते हैं। मुझे भी कच्छी भाषा के 10 पुस्तक प्रकाशन करने का सौभाग्य मिला है और बहुत सारी कच्छी भाषा की एक्टिविटी हो रही है। यहाँ हमारी कच्छी साहित्य कला संघ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम कच्छी भाषा की परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, जो 2 लेवल की होती है। एक जो पहला स्तर है वो लेवल है जान और दूसरा है सुजान। 2 लेवल पे हम परीक्षा लेते हैं और यहाँ कच्छ प्रदेश में बहुत बिन कच्छी भाषी शिक्षक, अधिकारी, क्लास 1-2 ऑफिसर आते हैं, तो उनको जो पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन करने में बहुत ट्रबल होता है, तकलीफ होती है, तो वो डिमांड करते हैं कि भाई हमको कच्छी भाषा सीखनी है। तब हमने, हमारे आदरणीय नारायण जोशी जी ने और सब साहित्यकारों ने मिलकर एक ये सिस्टम बैठाई है कि हम कच्छी भाषा का जो मांगे, सरकार गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट मांगे उनको हम ट्रेनर्स देते हैं हमारी तरफ से, और कच्छी भाषा की ट्रेनिंग भी देते हैं। बीएसएफ में भी वो ट्रेनिंग देते हैं। और कच्छी पाठावली जो प्रारंभिक अभ्यासक्रम है, पाठावली 1, पाठावली 2, इसके मुताबिक हम जान और सुजान 2 परीक्षा लेते हैं। यहाँ आईएएस ऑफिसर, डीएसपी, डीवाईएसपी, कलेक्टर, डीडीओ, ये सब ऑफिसर भी इस परीक्षा में शामिल होते हैं और काफी इंटरेस्ट लेते हैं कच्छी भाषा में। तो ये हमारा कच्छी भाषा का भी सौभाग्य है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो जागृति हुई है, अभी तो कच्छी भाषा, क्योंकि कच्छी भाषा का व्याप बहुत है। कच्छी में ऐसा एक दोहा है कि जितरा वसे कच्छ में एनो बमणा बाहर, पण छता पण कच्छ को ये कतई भूलते नहीं है। आप कच्छी लोग दुनिया के कोने कोने में आपको मिलेंगे। मुंबई में तो बहुत बड़ा समुदाय है, हमारा यहाँ का जो जैन समुदाय है, लोहाना है, भाटिया है, तो ये व्यापारी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी संख्या में है, लाखों की संख्या में है। तो आज भी वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन घर में से कच्छी को निकाला नहीं है। आज भी वो कच्छी को अपनी मदर टंग मानते हैं और कच्छी भाषा में अपना व्यवहार करते हैं। अफ्रीका के देशों में, केन्या, युगांडा, वहां भी कच्छी बसे हुए हैं, वहां भी कच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत के शेष जो इलाके हैं जहाँ कच्छी लोग गए हैं, तो कच्छी अपनी भाषा को उन्होंने बरकरार रखा है। हमसे साहित्य भी मांगते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारी कच्छी भाषा में ये सब काम हो रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन अखंड भारत में तो कराची और सिंध में बहुत सारे कच्छी लोग थे। पार्टीशन के वक्त जो वहां गए तो वो अभी भी लाखों की तादाद में कच्छी भाषा बोल रहे हैं। तो कच्छी लोगों की एक भावना है कि उनको बंधारण की अनुसूची 8 में उसको शामिल किया जाए और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान हो। ऐसी बाकायदा राज्यसभा में भी मांग हुई है
और यहाँ की आम जनता की भी एक जनभावना है कि कच्छी भाषा को अपना एक सम्मान मिलना चाहिए, सब क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान मिले, इस तरह से कच्छी भाषा को भी एक पहचान मिलनी चाहिए। क्योंकि कच्छी कोई भी भाषा होती है, इस भाषा का जो पिंड है वो 5 तत्वों से बना हुआ होता है। एक उनका धातु कोश होता है, अपना शब्दकोश होता है, अपना साहित्य होता है, अपना व्याकरण होता है, अपनी लिपि होती है। तो ये जो 5 मापदंड है, 5 मापदंड पर कच्छी भाषा सही है, क्योंकि उसके पास अपना धातु कोश भी है, अपना शब्दकोश भी है, अपना निजी साहित्य है, और साहित्य इतना समृद्ध है कि मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ कच्छ में जाम लाखा फुलानी का अमल था। बहुत प्रतापी राजा हुए लाखा फुलानी, उनके एक चारण कवि थे मावल साबानी, तो उनके जो दोहे हैं उस दोहे में भी कच्छी भाषा के सुराग मिलते हैं। तो ये 1000 साल तो को इसकी हिस्ट्री मिलती है कच्छी भाषा की। तो ये कच्छी भाषा का अपना लोक साहित्य भी है, और लोक साहित्य काफी मर्मी है, काफी उसका जो पोत है, उसका वजूद है, वो अन्य भाषाओं में जब ट्रांसलेट होता तो पता चलता कि ये कितना एक मायना रखता है ये साहित्य। और कच्छी भाषा हम देवनागरी गुजराती लिपि में लिखते हैं तो लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये अभी कच्छी भाषा का इस तरह से काम हो रहा है। और कच्छी भाषा के बारे में एक में आप सबको जो विशेषताएं हैं उनकी, वो सबसे बड़ी विशेषता उसकी लाघव है। कच्छी भाषा, एक दोहा है कि कच्छी भाषा एड़ी बरू की जी एकलव्य जा तीर, रांध रांध में चई सके गाल गजब गंभीर। यानी कि कच्छी भाषा ये ऐसी एक प्राणवान भाषा है, ये एकलव्य के तीर जैसी भाषा है जो अमोघ शस्त्र है, जो ऐसा वार करती है कि सामने वाला समझ जाता है और यो थोड़े में वो बहुत कह डालता है। तो एकाक्षरी जो शब्द है कच्छी भाषा में बहुत पाए जाते हैं। देखो मैं आपको यहाँ एक दो, ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन एक दो उदाहरण मैं दूंगा कि अगर कोई पानी भरा हुआ होता है तो उसके लिए शब्द है द्रो, अगर पुत्र वधु के लिए नो शब्द है। ये नो शब्द है, उनके कई अर्थ है। पुत्र वधु को भी नो बोलेंगे, 9 के आंकड़े को भी नो बोलेंगे, ये नाखून जो है उसको भी नो बोलेंगे। इस तरह से पो है तो पो के भी कई अर्थ है। बस मतलब इसका होगा कि ये कौन से वाक्य प्रयोग में आया है तब उसका अर्थ तय होगा। पो है तो पो जो गोबर होता है छाया का, छाण का, गाय का, जो गुजराती में छाण बोलते हैं, वो भी पो है। अगर किसी को कैसे कि तू जा गिर उसमें, तो वो भी पो होगा। ये पूरा वाक्य देखो, न तो पो द्रो में, देखो ये एकाक्षरी पूरा वाक्य है। अगर तू मना करता है तो जा पड़ पानी में, तो यह कहना है हिंदी में, गुजराती में यही कहना है कि नहीं तो तू पड़ पानी मां। तो इसके लिए कच्छी में ये एक ही वाक्य होगा जो ये वाक्य में सब एकाक्षरी है, न तो पो द्रो में। तो ये एक विशेषता कच्छी भाषा में बनी हुई है। देखो अगर कोई किसी बात का स्वाद नहीं है, लिज्जत नहीं है, तो कच्छी भाषा में कहेंगे ला न को सा। ए चिंतन, हेलो जी विश्राम जी। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है। हाँ, थोड़ा डेटा लिमिट बता रहा था इसलिए। हाँ तो उमा जी टाइम है ना अभी? ये टाइम है, टाइम नहीं है फिर भी है। ठीक है। सबको सब समझ पा रहे हैं ना आप? सर मेरी बात समझ तो पा रहे हैं ना आप? जी आप बोलते जाएं, हम लोग साथ साथ कुछ मेन पॉइंट्स को इंग्लिश में अनुवाद भी कर रहे हैं। ओके 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 लोगों ओके, के लिए जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये मैं बातें शेयर करना इसलिए चाहूंगा कि ये अपनी एक तासीर है, अपनी एक स्पेशल जो लाक्षणिकता बोलते हैं वो है। कच्छी भाषा में रूढ़ि प्रयोग का अपना एक कोश है, और रूढ़ि प्रयोग बहुत सारी मात्रा में यहाँ के जो क्योंकि कोई भी भाषा में 3 प्रकार के वर्ड होते हैं, हम सब जानते हैं कि तत्सम होता है, तद्भव होता है और देशीय होते हैं। तो कच्छी भाषा में जो देशीय शब्द है, जो यहाँ की कृषि और गोपालन संस्कृति से आए हुए हैं,
और रूढ़ि प्रयोग जो यहाँ के है वो बहुत मजेदार है। कभी हम रूढ़ि प्रयोग पे तो आखिर पूरा सेशन कर सकते हैं। यहाँ की जो कच्छी में चावक बोलते हैं, हिंदी में कहावत बोलते हैं, तो यहाँ की कहावत भी एक अलग मायना रखती है। तो ये सब कच्छी भाषा की जो विशेषताएं हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि कच्छी भाषा को अगर आप दूसरी भाषा से कुछ मिलजुल के आप देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि कच्छी भाषा शेष भारतीय भाषाएं हैं। दक्षिण की जो भाषाएं हैं, कर्नाटक की भाषाएं हैं, तमिल की भाषाएं, उनका भी जो वर्ड है वो कच्छी भाषा में इंक्लूड है। और सिंधी भाषा के तो शब्द होंगे ही होंगे। गुजराती भाषा का जो शब्द प्रयोग है इसमें ये तत्सम और तद्भव व्यापक प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। संस्कृत शब्द मैं कहना चाहूंगा कि देखो अभी हम संस्कृत में जो अनुनासिक है अं, ञ, ये हम गुजराती में नहीं बोल पाते, लेकिन कच्छी में संस्कृत के जो अनुनासिक उच्चार है वो हम उसका सीधा उस रूप में ही प्रयोग करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा एक दो। रंग यानी कि जो रंग है उसके लिए हम रंग बोलेंगे। जो अंगन, जो आंगन होता है, इसके लिए हम अंगन बोलेंगे। जो कंगन होगा इसलिए हम कंगन बोलेंगे। जो मूंग होगा इसके लिए हम मूंग बोलेंगे। तो ये अंग है। बाद में ञ होगा कि भाई हम आंख में आंजन करते हैं तो उसके लिए आंजणु, आंजणु। तो ये ञ है वो संस्कृत में से सीधा अनुनासिक आया है। जो हम रू वगैरह को पींचते हैं, जो कंतन का काम करते हैं, तो कातना, तो वो भी पिंजणो। और पंजई, हमारे यहाँ कच्छ में जो किसी के यहाँ पांचवी बेटी आए तो उसका नाम पंजई होता है। यह गुजराती में पांचवी, लेकिन कच्छी में उसको अनुनासिक ञ का उपयोग करते हैं, पंजई बोलेंगे। इस तरह से हिंदी में हम देखेंगे कि जो देखो कच्छी भाषा महाप्राण ज्यादा लेती है। जो हमारे जो व्यंजन है इसमें अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हिंदी में अगर यहाँ जहां ब लेगा वहां इसका जो तद्भव हुआ कच्छी में वो ब हो जाएगा। जो देखो बकना है तो गुजराती में उसके लिए बकू कैसे, और कच्छी में बोलेंगे बकरू, ब का ब हुआ। बादाम है तो गुजराती में बोलेंगे बादाम, और कच्छी में उसे बादाम बोलेंगे। देखो बादाम, बादाम। तो ये महाप्राण लेती है भाषा। इसका एक रीजन रहा होगा कि कच्छ बहुत ज्यादा विस्तार वाला विस्तार है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। ये कहने का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कई राज्य, मुझे तो लगता है जो हमारा केरला राज्य है उनके हिसाब से, उनके मुताबिक सेम्युलर हमारी जो स्क्वायर एरिया होगा 45,652 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ विस्तार है। शायद भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो ये यहाँ का जो भौगोलिक जो पर्यावरण है उसमें दरिया भी है, उसमें मरुभूमि भी है, उसमें महासागर भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और कहते हैं कि ये प्रकृति और पर्यावरण की तो प्रयोगशाला है। अगर नहीं आए आप तो एक बार कच्छ देखने जरूर आए, आपको कुछ नई चीजें अवश्य मिलेगी। ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो ये कच्छ का जो अलग कल्चर है, और यहाँ वस्ती बहुत कम रही होगी क्योंकि यहाँ काफी अकाल झेला है कच्छ ने, सुनामी झेली है, पार्टीशन के बाद तो युद्ध की विभीषिका भी झेली है। वावाजोड़ा यानी कि टाइफून्स दो होते हैं वो भी कच्छ में बहुत होते हैं, क्योंकि यो दरिया किनारा है तो यहाँ ये भी है। तो ये सब तकलीफ है, खास करके अकाल की तकलीफ। तो हम हिस्ट्री तपास करें, हिस्ट्री को चेक करें तो कच्छ में हर 3 साल में 1 साल अकाल पड़ता है। अभी लेकिन भूकंप के बाद 2001 के बाद कच्छ की पूरा चित्र बदल गया है। अभी जो इंडस्ट्रियल विकास भी हुआ, साथ साथ कुदरत भी मेहरबान हुआ कच्छ में, और बारिश भी का लेवल भी बहुत ऊंचा है अभी, और खेती बाड़ी का भी विकास अभी अच्छा है। लेकिन कभी मालधारी लोग रहा करते थे और ये दूर दूर से व्यवहार करते थे, तो उसको महाप्राण की ज्यादा जरूरत पड़े और कम अक्षर शब्दों में बात करनी, कम से कम शब्दों में बात करना पड़े। इसलिए ये भाषा, ये भूगोल ने और ये संस्कृति ने ये कच्छी भाषा का एक अलग सा एक क्लेवर बनाया है। तो ये सब चीजें हमको बहुत ही एक ध्यान खींचती है। और देखो अरेबिक असर भी झीलती है। तो अरेबिक असर में क्या है कि जो द होता है, द का द होता है, तो हम अदब बोलते हैं तो कच्छी में अदब होगा। दगो बोलते हैं, दगा,
तो उसको दगो बोलेंगे, द का द होगा। आदत बोलेंगे तो उसको आदत कहेंगे। और ये जो द होता है उसका जो हम जब यहाँ बोलेंगे तो कहीं पे द भी होगा, द नहीं द होगा। तो दातार है तो कच्छी लोग दातार नहीं बोलेंगे, दातार बोलेंगे। दंड नहीं बोलेंगे, दंड बोलेंगे। दातुन नहीं बोलेंगे, दंडन बोलेंगे। तो ये सब चीजें कच्छी भाषा को अन्य भाषाओं से अलग पहचान देती है। और हमने जो सुजाता जी भुजंग जहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको शायद पता होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कच्छ यूनिवर्सिटी में जब फरवरी में 2019 में हमने जो सेमिनार किया था, उसमें कच्छी भाषा का जो वैविध्य है, एक प्रदेश में कितने टाइप की कच्छी, कितना वेरिएशन है, उस पर जो काम हुआ था, बहुत अच्छा काम हुआ था। तो मैं आपको सिर्फ समय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक झलक आपको बताऊंगा कि देखो वाक्य रचना में भी, बोलचाल में भी यहाँ 2 प्रकार से वेरिएशन है। एक वेरिएशन पॉकेट के हिसाब से है, इसके लिए एक दोहा बना हुआ है, ध्रंग माक पावर बन्नी वागड़ में वरी खास, डट्यो पिवाए होते काछे जो इतिहास। तो यहाँ कंठीपट है, मानवी मुंद्रा तालुका है, उसका विस्तार कंठीपत कहते हैं। अबड़ा से लखपत का विस्तार अबड़ासा और घेड़ो कहते हैं। रापर बचाऊ को जहां भूकंप की ज्यादा असर थी वहां वागड़ बोलते हैं। जहां धोलावीरा है वहां उसको खड़ीर बोलते हैं। नखत्राणा जो कच्छ का काफी हरियाला और मीठे पानी वाला इलाका है, तो उनको यहाँ माकपट बोलते हैं। तो ये सब जो पॉकेट है प्राकृतिक कच्छ के, तो उस सब पॉकेट में कच्छी की बोलचाल की वेरिएशन मिलता है। बोली एक ही है, भाषा एक ही है, लेकिन उनका वेरिएशन मिलता है, उसके समानार्थी शब्द भी ज्यादा मिलते हैं। और एक ध्यान खींचने वाली बात यही है कि ये जो वेरिएशन मिलता है वो ज्ञाति के तौर पर भी मिलता है। यहाँ के ब्राह्मण है, यहाँ के क्षत्रिय बोलेंगे, चारण बोलेंगे, लोहाना बोलेंगे, ओसवार जैन बोलेंगे, महेश्वरी बोलेंगे। तो ये सब जो कम्युनिटीज, बड़ी कम्युनिटीज कच्छ में है, तो ये जो कच्छी बोलेंगे तो उनकी लहके में, उनके फोनेटिक उच्चार में, सब में कुछ वेरिएशन जरूर आएगा। तो 2 प्रकार की वेरिएशन, एक प्रदेशगत पॉकेट एरिया वाइज और एक ज्ञातिगत, 2 प्रकार के वेरिएशन कच्छी भाषा में मिलते हैं। मैं एक ही उदाहरण दूंगा, मेरे पास उदाहरण बहुत है लेकिन टाइम मुझे रजा नहीं देता, इजाजत नहीं देता है। तो खाना होता है, खाना, इसके लिए देखो 4 प्रकार के तो वेरिएशन है ही हमारे पास। एक खेंदासू, खेंदासू, खेनाई અને खेबो। एक लेडीज बोलती है कि मैं जाऊंगी, तो उसके लिए जो वेरिएशन है, आऊं वेंदिस, आऊं वेनिया, आऊं विंदियास, आऊं विंदिस। तो ये वेरिएशन प्रदेश और ज्ञातिगत है। तो ये सब चीजें सारी बहुत ही मायने रखती है। कच्छी भाषा के जो अपना एक वजूद है, अपना पोत है। तो हम कच्छी भाषा के बारे में अभी तो कुछ भी बातें नहीं कर पाए, क्योंकि इसका जो साहित्य है, कच्छी भाषा का अपना जो एक वैविध्य बना हुआ है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि इसके लिए हमें उसका एक खास तौर पे अध्ययन करना पड़ेगा। और जब ये चीजें अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट होके आप जैसे शुद्ध लोगों तक पहुंचेगी, तब जो भाषा प्रेमी हो उसको एक अहोभाव होगा कि ऐसी भी कोई भाषा है, एक कच्छ प्रदेश के कोने में पड़ी हुई भाषा है। तो उसके विकास के लिए हम सबको जो कुछ करना पड़े सो अवश्य करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी टाइम, समय मुझे और आगे बोलने की इजाजत नहीं देगी। उमा जी, मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार वेबिनार में मुझे शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर जी जी। हाँ, ये लिपि वर्ड कैसा होता है लिखने में कच्ची भाषा? लिखने में अच्छा, उसकी लिपि की बात की आपने? हाँ, लिपि वर्ड जो होता है ना, लिखने के लिए टफ है, इजी होता है? नहीं, लिखने में बहुत इजी होता है, हमारा मुहावरा ही कम होता है सिर्फ। वैसे तो क्या है कि कहते हैं कि कोई भी भाषा लिखने में, बोलने में कठिन होती ही नहीं है, हमारा उसका मुहावरा नहीं होता है, हम उससे जुड़े हुए नहीं होते। कच्छी भाषा में लिखने की लिपि खुद की नहीं है, लेकिन लोगों के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लिपि नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम हिंदी भाषा भी देवनागरी में लिखते हैं,
गुजराती भाषा ने भी थोड़ा डिफरेंट करके देवनागरी ही अपनाई है, मराठी भाषा ने भी देवनागरी ही अपनाई है, तो कच्छी भाषा ने भी देवनागरी अपनाई है। और उसके लिए जो थोड़ा सा फेरफार करना चाहिए उसमें वेरिएशन, वो कच्छी भाषा में करके हम लिखते हैं, लोग आसानी से पढ़ते हैं और लिखने में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये सही बात है आपकी कि यहाँ क्या है कि कच्छी भाषा वहीवट की भाषा, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा न होने की वजह से यहाँ लेखक जो लिखने की मुहावरा है स्कूल में भी नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को। हाँ, लेकिन एक बात अभी अच्छी है कि हम जो यहाँ गुजरात में जिला शिक्षण तालीम भवन GCRT होती है, शिक्षा का जो सरकारी ये को जो होता है जो ढांचा, तो जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के मुताबिक 1 से 5 कक्षा में अभी अपनी मातृभाषा में एजुकेशन होना चाहिए, ऐसी एक पॉलिसी है। सुजाता जी यहाँ बैठी होगी, उसको पता होगा कि यूनिवर्सिटी में हमने तो बाकायदा क्लास 1 और क्लास 2 दोनों क्लास का जो सिलेबस है उनका पूरा कच्छी कर डाला है। तो ये एक भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। Yeah, Sir? any other questions? Yeah, Jagir साहब। हेलो जी। हाँ सर, जी सर। अभी कच्छी के बारे में आपने बहुत कुछ बोला, अच्छा लगा, क्योंकि कच्छ तो हम लोग देखते ही रहते हैं, टीवी में भी देखते रहते हैं। जी, और जी। अमिताभ बच्चन जी का जो डायलॉग बोला है वो तो हर घर में पहुंच गया है। जी, तो जी। हम एक सवाल कर सकता है, क्या वो सिंधी जो है आजकल जो पाकिस्तान के पार्ट में पड़ा हुआ है, जी। आप लोगों का आपस में कोई मिशन एम्बेसीज द्वारा कोई एकता के मिशन में काम होता है क्या, उधर और बिल्कुल, इधर का? बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन देखो, ये थोड़े पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिकल इश्यूज और ये जब जो पाकिस्तान के साथ बना हुआ होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान पार्टीशन में जो कोई एक प्रजा ने झेला हो तो सिंधी लोगों ने झेला है। और जो एक कोई भाषा को सबसे बड़ा पार्टीशन नुकसान हुआ हो तो वो सिंधी भाषा को हुआ है। और हम तो चाहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही बात हुई कि वहां माँ हिंगलाज है, हिंगलाज का दर्शन करके आए। और जो पाकिस्तान में बहुत सारे कच्छी लोग हैं, सिंधी जो लिटरेचरकार हैं, उनको मिले, वहां एक सेमिनार करें। ऐसा तो ख्वाब सबको होता है हमको, लेकिन वास्तविकता का तो हम सबको पता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ और वहां के सिंध लारकाना और हैदराबाद जिलों से यहाँ से जो लोग कच्छ में आए, तो कच्छ के महाराओं ने उनको जमीन दी। और आज का जो गांधीधाम शहर बसा हुआ है वो माइग्रेटर सिंध से आए हुए सिंधियों ने बसाया हुआ है। वहां एक सिंधोलॉजी इंस्टीट्यूट बनी हुई है। सिंधोलॉजी इंस्टीट्यूट कच्छी साहित्यकारों के साथ कोलैबोरेशन है। और जब भी कोई सेमिनार होता है तब हम कच्छी और सिंधी के बारे में सेमिलर विषय लेके और कच्छी और सिंधी भाषा की तुलनात्मक अध्ययन वगैरह हम करते रहते हैं। इसके लिए यहाँ काफी प्लेटफॉर्म बना हुआ है। बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने जाकिर सिंह। सर थैंक यू सर, अच्छा लगा सर सुन के। हेलो सर, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? जी सर, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है? और पूछो सर, पूछो जो भी पूछना है। अच्छा सर, आप बोले रहे उधर से जो लोग माइग्रेटेड करके आ गया है जी, क्या कोई कच्छ से माइग्रेट करके सिंध में गया है क्या? कहाँ पे गया है? सिंध में, जो सिंध प्रदेश पड़ा हुआ। हाँ देखो, गए हैं। देखो, पार्टीशन हुआ तब माइग्रेशन दोनों तरफ से हुआ। तो ये क्या है कि कम्युनिटी के बेस पर हुआ। आप समझ सकते हैं कि वहां से हिंदू लोग जो थे वो आए, यहाँ से मुसलमान वहां गए, लेकिन वहां जाने का फ्लो बहुत कम था, आने का फ्लो ज्यादा था। तो एक बात मैं कहना यहाँ चाहूंगा कि हमारे जो दोस्त वहां हिंगलाज यात्रा में गए हैं पाकिस्तान, तो हमारे कच्छ के गांव में से जो यहाँ से कच्छी लोग गए हैं, तो वहां पाकिस्तान के गांवों में भी आज भी कच्छी भाषा को, अपनी कच्छी भाषा को रखा है अच्छी तरह से, घर में बोलचाल में भी रखा है। कच्छ को भी इतना ही प्यार करते हैं, कच्छी भाषा को भी इतना ही प्यार करते हैं। तो जो कच्छी कल्चर है वहां, वो अभी कच्छी पूरा कल्चर बना हुआ है, गांव का गांव बसे हुए हैं। ये हमको मैसेज मिलते रहते हैं, लेकिन हम मिल नहीं पाते, ये एक हकीकत है। थैंक यू सर फॉर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन।
जी सर। अच्छा लगा सर। और क्या है सर, ये हमारी इंडो पाक बॉर्डर बनी हुई है हमारे यहाँ उत्तर में पूरा तकरीबन 350 पौना 400 किलोमीटर की इंडो पाक बॉर्डर है, जो सिर्फ फेंसिंग है। सामने पार वो सिंध है, जो दक्षिण सिंध का इलाका लगता है, वो लगता है सर। हम भी हिंगलाज जी, वो हिंगलाज मंदिर का बहुत यूट्यूब में देखते हैं। जी सर। तो सिंधी काशी भाई भाई। जी अच्छा ठीक है, ये भी हमको मालूम पड़ गया। हाँ, हिंगलाज क्या कि पार्टीशन के पहले हिंदू धर्म का बहुत बड़ा एक शक्तिपीठ हुआ करता था। और हमारे जो 52 शक्तिपीठ जो हमारे शास्त्रों में मातृशक्ति के बोलते हैं, उनमें से एक ये हिंगलाज था, अभी भी है। और वहाँ के भी लोग, पाकिस्तान के लोग भी उसके नानी का मंदिर बोलते हैं। मुस्लिम लोग भी वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं और बहुत बड़ी इज्जत करते हैं। और यहाँ से जो हिंगलाज यात्री जाते हैं तो वहाँ वो मकरान में पड़ता है, बलूचिस्तान में, लेकिन वो सिंध भी अवश्य जाते हैं। और वहाँ के लोग कच्छियों के लिए काफी बहुत इज्जत करते हैं हिंगलाज यात्रियों की, क्योंकि हिंगलाज माता के प्रति पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा आदर है सर। सबसे बड़ा मंदिर है। जी सर। ठीक है सर, अच्छा लगा सर। धन्यवाद सर। जी सर बोलिए सर। सर जी सर। हाँ, इधर कर्नाटक में कहाँ तक बोली जाती है सर ये भाषा, कच्ची लैंग्वेज? कर्नाटक में कच्ची भाषा है। हाँ, अभी तक नहीं सुने सर, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कर्नाटक में देखो, जो कोई शहर होगा ना, बड़ा शहर, उसमें अगर यहाँ का कच्छी लोग होंगे तो कोई कच्छी इलाके में जाना, वहां तो तपास करना। तो कर्नाटक मैसूर में पड़ता है ना, मैसूर कर्नाटक ना, ठीक है। जी जी हाँ, बिल्कुल तो मैसूर ठीक है। में कच्छी लोग होंगे ही, 100% होंगे मैसूर में। कच्छी इलाका कोई होगा तो वहां आपको कच्छी सुनने मिलेगी, जी जी क्योंकि कच्छ में बहुत क्या है कि माइग्रेशन का बहुत बढ़ रहा है। पहले से मैंने बोला ना, अकाल पड़ता था, यहाँ कोई धंधा रोजगार नहीं था, तो देश के कोने कोने में लोग बसे हुए हैं। ठीक है, बहुत साल पहले निकल गए होंगे तो कच्ची भाषा छूट गई हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। आपकी Yeah, मातृभाषा क्या है? thank you. Professor Sachdeva, you have any question? We can't hear you. You are not audible. राम जी की मातृभाषा क्या है? सर, हमारी मातृभाषा कच्छी है। अच्छा, नहीं, क्योंकि ये सेंसस वाले इसको सिंधी के नीचे गिनते हैं, गुजराती के नीचे नहीं गिनते। तो हाँ। आपको क्या लगता है, कच्छी जो है ये गुजराती के ज्यादा करीब है कि सिंधी के ज्यादा करीब है? कच्छी, मैंने अपने लेक्चर में भी कहा सर, वो सिंधी के ज्यादा करीब है। सिंधी और कच्छी भगिनी भाषा है, लेकिन हमारा क्या है कि हम गुजरात से जुड़े हुए हैं। कच्छ क्या है कि 1948 तक, 1 जून 1948 को कच्छ के महाराव श्री मदन सिंह जी ने जब भारतवर्ष में उसका विलीनीकरण किया, और तब कच्छ क्या था, सी स्टेट का एक सेपरेट स्टेट था, ABC, सी स्टेट का सेपरेट स्टेट था। बाद में 1956 में क्या हुआ, उनको मुंबई राज्य के साथ जोड़ दिया गया। और बाद में 1 मई 1960 को महाराष्ट्र भी अलग हुआ और गुजरात भी अलग हुआ, सेपरेट राज्य बना भाषा के तौर पर, और कच्छ को एक जिला बनाकर गुजरात का हिस्सा बना दिया गया। और गुजरात, हमारी राजभाषा गुजराती है, तो स्वाभाविक है वो गुजराती की असर ज्यादा झेलेगी। तत्सम शब्द है, मीडिया की असर है, तो मीडिया के प्रभाव से और राजभाषा की वहीवट की भाषा होने के वजह से यहाँ गुजराती शब्द, तद्भव शब्द बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर उसका DNA जो है तो कच्ची भाषा का, वो मिलता जुलता सिंध से है, सिंधी भाषा से मिलता है। वो सिंधी की उपभाषा नहीं है, सिंधी के सेमिलर भाषा है। वो अपना जिस तरह से सेंसस वाले जो है उनको सिंधी के नीचे गिनते हैं। मैं ये देख रहा था, मैंने अभी देखा है सेंसस का बोलियों का, मैंने टेबल अभी देखा है आपसे बात करने से पहले। मैंने जब अभी टेबल खोल के देखा तो वो सिंधी के नीचे गिनते हैं कच्छी को ना, उसको गुजराती के साथ नहीं गिनते, उसको अलग भी नहीं गिनते, उसको बोली मानते हैं, एक अलग बोली है, तो उसको भाषा के नीचे वो सिंधी के साथ जोड़ के गिनते हैं, गुजराती के साथ नहीं जोड़कर चलते।
तो मतलब आपका जो रीजनिंग है वो उसके ज्यादा, वो सेंसस वाली जो क्लासिफिकेशन है आपके लिहाज से ज्यादा ठीक है। मतलब वो गुजराती के साथ जोड़ देते हैं इसको, तो फिर आपको लगता है कि सिंधी के ज्यादा करीब है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था बस आपसे। जी सर। And I think, we all remark that it's not the geography of the place, but the history of the place that tells us more about the place, So I think वो हम लोग जो है हमेशा जब एक स्टडी करें एक जगह की, तो हमको वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। केवल एक लोकेशन लगा के हम उसको एनालिसिस नहीं कर सकते किसी चीज का। हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ की। यस सर, धन्यवाद। या बहुत धन्यवाद तारिक, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा था तारिक ने थैंक्स प्रपोज किया। धन्यवाद उमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद विश्राम गदवी जी। आपको सुनने का एक ये सुनहरा मौका था और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके व्याख्यान में से कुछ मेजर पॉइंट्स को दूसरों को जो हिंदी में नहीं समझ पा रहे थे उनको अंग्रेजी में उसको अनुदित करके दूं, तो वो मैंने किया। और उसे करते हुए मुझे आपको सुनने का और आपके व्याख्यान को समझने का एक अनूठा अवसर प्राप्त हुआ। अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आपने बड़ी सरलता से कच्छी भाषा के विषय में बताया, जिससे इस संस्थान का लगाव बड़ा पुराना है, लेकिन जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जो गतिविधियां हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपने भौगोलिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई अलग अलग आयामों को चुनते हुए आपने कच्छी के बारे में बताया। हम सब का ज्ञान बढ़ाया। हम सब आपके व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तारिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मिलके हमें भी भाषा के लिए काम करने की नई ऊर्जा मिली है सर। और उम्मीद है हम लोग आगे मिलजुल कर कुछ काम करेंगे कच्छी के विकास के लिए। जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कच्छ के बारे में जो कुछ सुना है, हम आसामीस में वो लिखेगा, जरूर लिखेगा हमारे पेपर में, क्योंकि असम के आदमी भी जान सकते हैं। और कच्छ जरूर आना एक बार। थैंक यू सर। ठीक है क्योंकि गुजरात के कल्चर से कच्छ पूरा कल्चर जुदा है यहाँ का। गुजरात से उसका जोड़ान है, गुजराती है, हम पहले गुजराती है बाद में कच्छी है, लेकिन गुजरात की जो कल्चर है वो थोड़ा अलग है। कच्छ का कल्चर है वो थोड़ा अलग है। उसको अलग नजरिए से देखना चाहिए दोनों को। हाँ, मन तो है सर। Yeah, thank you very much. We started at 2:30. I think it was one of the longest sessions, 4.5 hours. So, but we had 5 wonderful speakers with us. So we are indeed very fortunate. बहुत धन्यवाद सब लोगों को। प्रोफेसर उमा जी, एक बात कहना चाहूंगा। बताइए। एक बात कहना चाहूंगा, वो सर तमिलनाडु सौराष्ट्री का जो लेक्चर दिया वो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, कुछ सुन पाया, समझ नहीं पाया। तो वो हिंदी में अवेलेबल हो ऐसा कुछ करिए मैडम। Now what we will do is we will try to get it interpreted. Then we'll place the recording. YouTube में recording भी we will put it all the recordings of the whatever languages were discussed here. We will take those original recordings, ask somebody to interpret in Gujarati or Kach, or whether it was Tamil or Saurashtra, and then we will also make it available on YouTube. Yeah. So now, in fact, Uma, I was thinking you have generated something very new in this discourse. People are interested in one minority is interested in the story of the other minorities. Exactly. And see, that's the whole idea. Their other minorities also, about their stories into their. I think this will be a very enriching discourse when they will write about other communities equally, not only about their case, but listening to the other cases and all that. So this exercise that you have begun has, I think, had a very fruitful effect of making people aware of each other's diversity. I'm sorry to interrupt now. Please make these remarks in our closing session, which is going to begin in 2 minutes. Okay. So that would be nice. Like now, I would like to thank all the wonderful creative writers who kept the session live for 4.5 hours from 4:30 onwards. Professor Jyotirmoy Prodhani,
who represented Rajbangshi, Professor Roop Bhat, our own CIL person, he represented Kashmiri, Mr. Sethuraman, he spoke on Saurashtra, Saurashtra, they have two alternate names, and then Dr. Shakthi Jyothi, who spoke on Tamil, and the last speaker, with full smiles even at this hour, Mr. Vishram Gadhavi. It was lovely to listen to all of you, and like Professor Sachdeva said, it has opened up new dialogues for our institute, and I think we will continue this exercise, and we are also learning from each other, and the whole idea is celebrating mother tongues is also celebrating our identities and our cultures, and we wanted to be together with all of you, especially minorities. That is the reason we wanted Kachi, Rajbangshi, different minor languages that represent minorities, the linguistic minorities. So we will continue this dialogue in various other forms. The credit goes to all my colleagues who visualized this, like right from Professor Shailandra Mohan to like Sujay Sarkar, Tariq Khan, Sanjay Kumar Bagh, Sujata, and of course myself, I don't know whom I forgot, because we are 6 of us, Sanjay Kumar Bagh, Sujata from the RLCs, Tariq Khan, Sujay and myself from the CIL, who are part of this committee, and all other colleagues who helped us indirectly, like Prem Kumar, Pankaj, and many of them. So thanks to all of them for giving And their Alindra Brahma. Alindra Brahma is our committee member. Thanks, Sujay, for reminding. And now we are coming to the end of this session. Once again, I thank all of you for being with us. Now I request Sujay Sarkar, member secretary of this organizing committee, to take over and begin the closing session. We are having a very short closing session because all of us are tired. All of you are also tired. So we will have a short closing session. Now over to Sujay. Thank you, madam. सबको नमस्कार. Thank you, sir. आप लोग आज हमारा सब जुड़ा है. ये लास्ट सेशन थोड़ा टायरिंग था, फ्रेंकली बोलूंगा, क्योंकि इतना लंबा टाइम चला. पर लास्ट में आके मुझे जो अच्छा लगा है, ये इंटरेक्शन जो सचदेव सर मेंशन किया है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी दूसरा माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में जानने का जो इच्छा, ये बहुत अच्छा था और ये देख के अच्छा भी लगा है. तो ये 3 दिन का कार्यक्रम था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का. आज लास्ट डे, लास्ट सेशन है, बट ये कार्यक्रम आगे भी हमारा जारी रहेगा. उसका भी अनाउंसमेंट आप लोगों को मिलते रहेगा आगे. Right now I request my colleague Dr. Tariq Khan to brief this 3 days program to all of us. Dr. Tariq Khan is officer in charge of National Translation Mission. He is also handling 2 regional language center. One is in Patiala, one is in Solan. Tariq bhai, please. Thank you, Sujay ji. It is my pleasure to present a very brief report on the 3-day celebrations that we began in the context of Matribhasha Divas. In pursuance of the ministry's order and in pursuance of the mandated goals of CIIL, the Central Institute of Indian Languages, we organized the Matribhasha Divas 2022 on a large scale, and a committee comprising the academics from the institute headquarters and regional language centers took up the responsibility. Professor Umarani P. and Shri Sujay Sarkar served as the chairperson and member secretary respectively. In what follows, I seek to present the report of this committee's initiatives focusing on the International Mother Language Day 2022. The committee planned to celebrate the Matribhasha Divas through a host of online programs for 3 days, an online essay competition, and a series of online lectures in mother tongues. The programs took place on 21st, 22nd, and 23rd February, and the participation of people and languages across the
country. Highlight of this Matri Bhasha Divas celebration at CIL was the inclusion and representation of numerous languages and mother tongues of India. Day 1, the inaugural session took place on 21st February 2022. Professor Uday Narayan Singh served as the chief guest and delivered a talk on mother tongue. Shri T.S. Nagbharna and Professor D.N. Shankara Bhat served as the guests of honor and expressed their views on mother tongues. Professor Shailendra Mohan presided over the function. This inaugural session also saw a huge participation of linguists, language enthusiasts, literary scholars, and creative writers. And we are very happy to report that our former directors, including the founding director, Professor D.P. Patnaik, Professor Rajesh Asdeva, also took out their valuable times and joined us for the cause of mother tongues. On day 2, I'm happy to report that the program on day 2 was divided into sessions. The first session focused on the ideas of eminent scholars and creative writers, while the second session focused on the ideas of community persons. The first session saw Professor G. Uma Maheshwar Rao, Professor Naduvaktam Gopala Krishnan, Janab Khalid Hussain Sahab, Swami Antar Nirav, and Professor Anil Kumar Baro expressing their views on mother tongues. I am just avoiding to describe their achievements in the areas to save time. The second session, titled Ideas of Community Members, saw several scholars express their ideas as members of various indigenous language communities. In both the sessions, the speakers chose to speak in their mother tongues with occasional mixing of English and other Indian languages. On day 3, I'm happy to report that the third day also comprised of 2 sessions. And the first session saw the launch of our lecture series in mother tongues of India. A key feature of this series is the delivery of talks in various mother tongues of India. Professor Balwant Shantilal Jani, Chancellor Harilal Gaur University, Sagar, delivered the first lecture in Gujarati. And we are likely to see many more such lectures in coming weeks. In the coming weeks, eminent scholars would deliver their ideas in various languages and mother tongues. The second session, titled Ideas of Creative Writers, which has extended to this point on promotion of mother tongues, included several prominent creative authors, writers, poets, and linguists from across the country. Professor Jyotirmoy, Prodhani, Professor Roop Krishen Bhat, Mr. K.R. Sethuraman, Dr. Shakthi Jyothi, and Mr. Vishram Gadhavi, representing Rajbangshi, Kashmiri, Saurashtra, Tamil, and Kachi, participated in this session as speakers. I'm also happy to report the outcomes of our initiative called Essay Competition. I would like, if Dr. Sanjay Kumar Bagh is present here, I would like him to at least turn on his video, and I would like to turn off my video because this program was coordinated by Dr. Sanjay Kumar Bagh, and because of health issues, he's not able to speak today. I'm presenting his report, and I'm presenting this report on his behalf. This initiative, the essay competition, initially saw 27 expressions of interest, but later it received only 13 entries from 9 languages. The winners of essay competition are as follows: Sansuma Ramchiari for Bodo, Seuli Basak for Bengali, Dr. Usha Rani R for Kannada, Ashutosh Kumar Jha for Mathili, Dr. Subbalakshmi Das for Udiya, Gami Dalawar for Panar, Rai Moni Mandi for Santali, Jivat Keshwani for Sindhi, and Miriyala Satyanarayana for Telugu. And now we are in the closing ceremony. That's all from my side. Thank you for your patience. Thank you, Tariq, for your wonderful briefing. Now I would like to invite comments from Professor Sachdeva. You started saying something at that time. You can give us your feedback or some advice for future programs. First and foremost, I think I would like to thank all of you that you're stuck to the tradition of this great institute in bringing people together from diverse streams and taking over the responsibility. And I think kindling interest in their minds that language is
of importance to all of us, and that we are there. We can act as custodians, however small our size, whatever our limitations today. It doesn't stand in the way of the growth of ideas. We continue to support and be with the people and give them opportunities to articulate. For we are the only institute that can do it. And we are doing it in whatever way. We'll do it to the best of our ability. That I'm absolutely convinced, regardless of who is on the chair or who's not. The ideas continue to go on in this institute. And I think that's extremely important, the idea of coming to this mother tongue and all that. We have Professor Patnaik, who was the founding director, was the champion of mother tongue. We all know that. And his everybody, if could swear by their faith in the institute, because Dr. Patnaik was seen as somebody who propounded that the value of mother tongue in this. And he knew the entire discourse. He knew the hegemony of the bigger languages. He knew the need for multilingualism. He knew the inequalities even in multilingualism. You see, multilingualism had all kinds of things in it. Yet he wanted us to be thinking and be involved in this. So I'm very happy that you have thought of this. If CIL has to take a leadership role, as it will have to, it is bound to, in doing something on the design of multilingual education in this country, I think all these feedbacks from the communities within will definitely help us to think better. The kind of presentation that the Madurai man made about Saurashtra there, I was remarking even then that how that one case study when Professor Pandit was there, he made this very important idea about what is multilingualism in India. He wrote about the bilingual grammar of a Tamil Saurashtra person. And then he also made the statement that in India, it is the maintenance of language that is the order of the day and not loss. We may get deeply influenced by the dominant language. Our entire vocabulary may start changing, our patterns may start, but we keep on sticking to our mother tongues for a long, long time. And that is the identity of this country. And to maintain and nurture that identity is our duty. And now with the resources that have cast, we are an independent nation. We have a country that is thinking responsibly about providing for multilingual education. And, we have always projected India, CIL, as the place which promotes harmonious multilingualism with strong roots in mother tongue. And we know that when we say strong roots in mother tongue, we are aware that often the roots are not strong. Often they're not getting the resources that is there required. Often constitutional duties are not being met. Often states are ambivalent in the policies. And yet, CIL has to engage deeply with each and every state. I remember I have told this mentioned to Professor Shailendra Mohan also, CIL has to have a feel for each state. Every state must be involved in it. And all the communities that are there, all the linguistic minorities which are listed, even in terms of the 121 communities that we talk, census talks of, 99 become complete minorities even by Census India. And we know there are far more in terms of mother tongues. But building an exercise of engaging with them, nurturing them, making them feel that they're as important as anybody, regardless of your size, regardless of the classification of the government, we care for you equally. And you are a valuable part of our history. And you shall continue to contribute to the growth of diversity of this country. In the quest for unity, we cannot forget our roots, which are diverse. You see, so I suggest that we continue with this whole exercise of being together on this issue. And I'm very, very happy. New things have happened about communities reporting about each other. This, I think, today, suddenly, when one person, Zaki, talked about, he wants to write about the Kachi case, or somebody wants to talk about the Saurashtra case in his Gujarat back there. I think these are very important that we talk about. Nobody knows the diversity of this country fully. Nobody can arrogantly assume that he does. It is a story to be told over generations again and again across people in different languages and different voices by people. And this little exercise that CIL does contributes to the growth of that. So it should be a dissemination of continuous commitment to the idea that we are wedded to the idea of promoting diversity. We care for all, and we will do our very best to make it possible. Thank you so much, and wish you all the best in your future endeavors as well. Yeah, thank you so much for your lovely remarks. Now I invite Professor Shailendra Mohan, Director CIL, to give his closing remarks. Yeah. Okay. Namaskar. Yallarigu namaskara. Vanakkam, Johar, Sasriyakal.
भारतीय भाषा संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति एवं आपकी सहभागिता के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि हमें पता है कि मातृभाषाओं की महत्ता तथा उसकी स्थिति के बारे में विश्व को ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 से 2032 तक देश को स्थानीय भाषाओं का दशक भी घोषित किया गया है। तो इस प्रकार अभी से लेकर 10 वर्षों तक हम इसी तरह मातृभाषाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे और ये 3 दिन के बाद हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी करेंगे, जिसे हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि इस अनूठे भाषाई विविधता वाले देश में हम भारतीय भाषाओं में कार्य करें और हम ये प्रयास करें कि हम भी खुद एक नई भारतीय भाषा सीखें और दूसरों को भी एक नई भारतीय भाषा सीखने के लिए प्रेरित करें। ऐसा अगर हम कर सकें तो भारतीय भाषा संस्थान इसमें प्रयत्न करने के लिए तैयार है। और जैसा कि हमें पता है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एवं मातृभाषाओं की महत्ता तथा उपयोगिता पर बल दिया गया है और सभी मातृभाषाओं के विकास पर अधिकतम जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की साधना हम भारतीय भाषा संस्थान भविष्य में अपना योगदान इस दिशा में करते रहेंगे और मुझे आशा है कि राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में हम सभी विद्वानों का मार्गदर्शन, सहयोगियों का सहयोग एवं आप जैसे विद्वानों का समर्थन मिलता रहेगा। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रोफेसर उमा रानी, डॉक्टर तारिक खान, डॉक्टर संजय बाग, सुजाता भुजंग जी, अलिंद्र ब्रह्मा जी, श्री सुजय सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। और इसी आशा के साथ फिर से आप सभी को विश्व मातृभाषा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मातृभाषा, जय देश, जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Professor Mohan, for this wonderful closing remark. I take this opportunity to thank my committee very briefly. Like they have been working day and night, like for last few days. Sujay, Tariq, Alindra, Sanjay, Sujata, and they had co-opted several members. And I also would like to thank Pawan, Tejas, and many others who were involved in making this program successful. Without the audience, we would not have had any program. So I would like to thank the audience during the last 3 days. You have made it beautiful. So let us pray that we will have many more opportunities to interact with community people, creative writers, and other people who are involved in one way or the other with languages, and we will celebrate each and everyone's mother tongues. Jai Hind. Thank you. Thank you. Jai Hind. Yeah, with this we come to an end. We come to the end of this session. I once again thank all of you for being with us. Have a lovely evening. Bye. Thank you.